Bharat, and everyone, please, 30 seconds. Please, 30 seconds. Hello, Priyanka Di. First of all, to begin with, a very happy Sushant day to you. And uh, I mean, I'm lost of words right now. It is one of the best return gifts that we could expect from Sushant in form of you coming here today and gracing your presence. So thank you for that. I just want to promise you this that by coming here today, you have simply quadrupled our strength. So we are going to try and ensure that we stand by your side, even more stronger till we reach the conclusive end to this case, and we want justice for Sushant. Thank you so much for coming. Thank you. Let's keep together in solidarity, and I'm sure this time we'll get justice. Who knows? इतनी ज्यादा आग लगी हुई है आज के डेट में बॉलीवुड में. सबसे पहले तो हेलो एवरीवन. To begin with, thank you so much for all your support. Trust me, I wasn't gone. I wasn't gone. Uh, I would just call it that yesterday wasn't my day. But it's fine. When it comes to this campaign, when it comes to justice for Sushant and Disha, nothing's bigger than that. So, and also, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रॉमिस मैंने प्रियंका दी से किया था, that is the promise. And all of your love and your support brings me back. Soon, मतलब आज ही कर दिया, नहीं तो आज भी I was thinking to take a gap. But yeah, this is important. आज का session, as we know, we were continuing with a particular sequence of sessions from Disha's death to everyone in between. I mean, from 8 June and so on. And we had reached a phase jahan pe we very well knew. So the last time that we discussed related to this particular case was the fact we talked about Bihar police. We talked about the U-turns and everything that has happened beach mein. Then we had an amazing Sushant day. To begin with, I'd like to thank Varun Kapoor, Kapil, uh, Yash, Dubai Tamzan, uh, Shweta, Insaf SSR, Prashant Kumar, Mamta Kale, Preeti Pandey,
Mr. Wankhede, obviously, um, you know, and Priyanka Di, first and foremost. So, thanks to each and everyone who made that day one of the best days I've had in this year and one of the best weeks that I've been having since this I've been a part of this campaign. Despite of whatever is happening, on personal level, but that's out of relevance. So I'd like to extend my thank you to each and every one of you to make that possible. And that unity which we had seen on Sushant Day has become a grave danger for Bollywood these days. And if you know, पिकाचू तो ऑब्वियसली पिकाचू के बिना क्या मैं क्या हूँ उसके बिना. हाँ, वैसे मैं बता दूं, he has been into hibernation as he calls it, but उसका कुछ personal काम है, वो पहले से pre decided था. So maybe for a couple of weeks he might not be coming, he might come in between, he would. So don't worry, he's not going anywhere. उसके बिना ये channel is incomplete, so that's not happening. On top of that, we all know what has been happening now in terms of ये BBC एक नए propaganda के साथ आ रहा है, like about a study that they have done on how YouTubers are trying to spread hate and disgrace in the name of Bollywood, which they deserve, which they deserve completely. But now it seems that we are reaching somewhere. We are reaching somewhere which is rattling them to the core, and that is our strength, people. So it's time. Exactly. Hamisha is saying that Bollywood dar gaya. Yeah, obviously, they are rattled. They are scared, and that's why BBC is coming up with such a kind of a documentary. Boycott BBC. Let's see what they come out with in terms of their documentary. If they are portraying us, maybe अभी तक मैंने पूरा वो देखा नहीं, but we really need to see. And if a firm like BBC is stepping in to talk against YouTubers, we'll stand together. Oh hell, we can have unity, and we have seen it. We will stand together more stronger, and that's my promise to any and every YouTuber who's facing this. Starting from, because I know Sandeep Fogart के ऊपर Sandeep Fogart uh, के ऊपर केस किया गया by Salman Khan. So I'm with you. Style Rug, I'm with you. Uh, जितने भी हैं, जितने भी यूट्यूबर्स जिनको ये बीबीसी बीच में लेके आ रहा है, लेट्स स्टैंड टुगेदर. वरुण कपूर, आई एम विथ यू. एवरीबडी, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, ABCDEFG, if they are going ahead and maligning us, then we need to show them that we can stand together, and that's what we are going to do. And we'll hit them with the truth to their faces. ठीक है? And anyone who is talking about this campaign, we will also be going ahead and standing with them. Yep, only three got through: Ujjwal Narayan, Paras Bhatt, and Sandeep so far. Exactly. But what BBC is doing is putting all the YouTubers in bad light. And it is, for me, it is a very structural, it is a very systematic way of trying to scare us all. We won't be. मैं बहुत छोटा सा, मतलब मैं तो यूट्यूबर भी नहीं बोलूंगा अपने आप को, बट this is something, this is our strength, and this is the time we need to stand together, and we will, despite of our personal differences, no matter what it is. Let's keep them aside, let's focus on the case, and let's grill these people more. And how are we going to do that? There are a couple of things that I wanted to discuss. uh, there is a promo, KD General, about this particular BBC documentary that I have seen. It is revolving on Twitter as well. Abhi thodi der mein, once we are, towards the end of the session, we'll play it and we'll see what it says, and we'll get into more discussion about it. But first, to begin with, हम तुम्हारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती जो बहुत इंपॉर्टेंट होती और तुमको सुनना पड़ती. ठीक है? एक चीज
जो यहाँ पे सबसे पहले मैं शेयर करूँगा, जिस पे मेरी नज़र गई, ये मैंने सुशांत डे वाले उस पे भी शेयर किया था एज एन आई डिड शेयर दिस इंफॉर्मेशन on that live session. I don't know how many of you were there, but let me share this. ये जो इतने टाइम से 14 जून की रट लगा के रखे हैं नितिश राय टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि थैंक्स टू अ पर्टिकुलर वॉरियर मुझे इतनी मतलब बहुत ट्विस्टेड चीज़ें मिली हैं नितिश राय से रिलेटेड, एक इनडायरेक्ट लिंक मिला है नितिश राय से रिलेटेड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो या दैट ऑल्सो वील कवर दैट टू. बट now, what I'm about to show you is something different. Post that, I'll also be going ahead and showing you. Post that, we'll move on to the CDR wala part, and uske baad, post the CDR wala part, we would be going ahead and moving further to Nitesh R. Rai. And people who don't know who Nitesh R. Rai is, by the end of the session, you would know. Okay, so let me just quickly share the first thing that doesn't make sense to me is right here. Just a moment. Okay. CDR पे भी जा रहे हैं. CDR पे अभी इसके बाद ही जा रहे हैं. ये तो बहुत एक छोटी सी चीज़ है which I want to share. I don't know how visible this would be. It's not clear because it's a screenshot taken. However, अगर आप फ़ोन की स्क्रीन पे, I'm not sure. Let me check. नहीं यार, it's not visible. I'd have to get. Okay, so मैं बस इतना बता दूँ कि ये स्पॉट बॉय का एक आर्टिकल है which says Sushant Singh Rajput commits suicide at his Mumbai residence. Okay. Now, if we see on to the left hand side, the left section that we are seeing here that says Sushant Singh Rajput commits suicide, which is circled in blue, this the upload time shows 5:21. Okay, AM PM कुछ नहीं लिखा है, but लिखा है 5:21. Okay, ध्यान रखना 5:21. Now, on the right section, here it says updated time. It's 15:55, which is 3:55. अब मेरे को एक बात बताओ, 14 जून ना. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये स्पॉट बॉय इज फॉलोइंग द 24 आवर वाला 24 आवर वाला सेक्शन और द 24 आवर वाला पैटर्न इन टर्म्स ऑफ अपडेटिंग टाइम, क्योंकि उनके राइट साइड वाले सेक्शन में ये लिखा है कि लास्ट अपडेटेड ऑन 15:55 विच इज 3:55 इन द आफ्टरनून, तो फिर अपलोड टाइम 5:21 कैसे है? वो तो फिर 17:21 होना चाहिए ना, अगर शाम है तो सुबह 5:21 पे. और अगर हम ये भी समझे कि चलो ये शाम को 5:21 का अपलोड टाइम है, तो जो राइट साइड वाला सेक्शन है उसमें लास्ट अपडेटेड 15:55 मतलब दोपहर को 3 बजे कैसे हुआ, जब शाम को 5:21 पे अपलोड हो रहा है ये दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, तो वो लास्ट अपडेटेड उससे पहले के टाइम का कैसे हो जाएगा, राइट? सो द वेरी फर्स्ट थिंग, मेरे पास इसकी ऑब्जेक्ट आईडीज भी आई है. आई वुड बी गोइंग अहेड एंड सिटिंग ऑन देम. आई वुड बी कन्वर्टिंग द टाइम स्टैम्प एंड मे बी कल के सेशन में आई विल कम विद ऑल दोज टाइम स्टैम्प्स एंड विल शो इट टू यू सामने कन्वर्ट करके दैट हाउ exactly it is going ahead and showing that it got uploaded at 5:20 in the morning exactly. Yes, I agree. Dino Moria ka 5:41 या 5 something पे ही tweet आया था, and there are also a couple of other sources who uploaded at the same time as well. So this is a big question. This is still a question, and I think that Spot Boy should be answering it because of the fact कि अगर अपलोड टाइम 5:21 है और अगर हम उसको शाम का टाइम मान के चलें, तो फिर लास्ट अपडेटेड टाइम 15:55 कैसे होगा, which happens to be 3:55 in the afternoon. That makes a big difference. Because
स्पॉट बॉय इज फॉलोइंग 24 आवर्स वाला पैटर्न इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो दोपहर को 12 बजे के बाद जो भी टाइम होता है इट बिकम्स 13, 14, 15 एंड 16 एंड सो ऑन. And whosoever follows 24 hours का time pattern, अगर upload time is showing 5:41, it means it's early in the morning. So how can spot boy, एक second, uh, Rajni, it's fine. Whatever there is, it has already been done on a personal level because that's how I prefer, and not doing it in public. So all school, chill. अभी कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, as far as I know. But proceeding further, so my point was कि अगर 5:41 पे सुबह अपलोड हुआ है, तो how in the hell did Spot Boy know at 5:21 in the morning that Sushant Singh Rajput has committed suicide? पहले वो अपलोड होके प्राइवेट रखा गया, उसके बाद अपडेट करके पब्लिक किया गया, और उसके बाद लास्ट अपडेट हुआ दोपहर को 3:55 पे. I have got its object IDs. Tomorrow, maybe tomorrow I'll do this. मैं ना आज सेशन के बाद I'll be sitting and converting those object IDs into timestamps, and मैं पूरा sort करके रख लूँगा. Tomorrow we'll go ahead and get into it and we'll see. इन्हीं के आर्टिकल से, this particular article से ही we'll get everything कि कितने बजे क्या क्या चीज़ें अपलोड हुई हैं after converting the timestamps. So we'll be doing that tomorrow. ये मेरे दिमाग में थी, so I felt like this is something which really should come out. So this is the first order of business. Business as in first order of moving towards the fight. The first question, okay? भाई आज मेरे को कोई पूछ रहा था, पता है, आज कमेंट सेक्शन में एक बहुत अमेजिंग सा एक second. Marketing works when you talk to same thing again and again. We need to do the same, but for a positive impact and cause. Exactly. Okay. आज पता है मेरे को एक कमेंट आया, मुझे लिखते हैं कि किसी एक वीडियो पे बाइक के पैसे तो जमा हो गए होंगे. मैंने बोला बाबू बाइक में सुपर बाइक के हो गए, तो बता कौन सी लेनी है, निंजा, डुकाटी, तेरे को तू जो बोलेगा मैं वो भिजवाता हूँ. So the idea of saying behind it is people would come, people would say things, people would like try to drag you to the mud. It's on you how cautious you are. मिस्टेक सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, सबसे होती है. The best of us, we choose to keep that aside because that's not of relevance right now, neither my personal life, neither anyone else's. सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान. सो एक और चीज, रिया चक्रवर्ती की जो डेट थी आज, विच वॉज 24 जनवरी, जो हियरिंग डेट थी, वो डेट फिर से हट गई है. देयर इज नो नेक्स्ट डेट, देयर इज नो नेक्स्ट डेट इन अकॉर्डेंस. वो डेट अभी भी हटी हुई है. सो लेट्स आस्क एनसीबी व्हाट्स हैपनिंग. I didn't block you on Insta. My Insta is वहाँ पे आपको Instagram user दिखा रहा होगा. It's deactivated for a while. I just deactivated my social media for a while. Wasn't doing that. But yeah, I'll ensure that I've not blocked anyone, people. I'm not that guy. Okay, so let's proceed further. वो जो 24 जनवरी की डेट थी, जो एनसीबी ने फाइल करी थी, a petition against the bail of Riya Chakravarti. That particular petition, उसकी डेट नवंबर के महीने से आगे 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 आगे, 1 महीने आगे, 2 महीने आगे, 3 महीने आगे. पहले 7 दिसंबर, पहले 10 दिसंबर की होती है, फिर वो आगे बढ़ के जनवरी, 24 जनवरी की हो जाती है. एंड टुडे इज 24 जनवरी. देयर इज नथिंग इन इट. आज वो डेट है ही नहीं. So that's very concerning. Let's start asking NCB. I know Mr. Wankhede is not there anymore, but the new one, Mr. Vijendra Singh, who has taken over, he should answer. And we should know what's happening.
बिकॉज अगर आप देखो कि जितनी भी एजेंसीज हैं अभी at this particular moment, while Bollywood is trying to retaliate against the movement, agencies are sitting shut. I'm not raising questions on agencies in an aggressive way, but they are sitting shut. And we really need to understand why are they doing it? Has there something already been cooked which we aren't aware of? Again, speculations can be many, many, but we need to understand by putting in our all our minds and our hearts to it. We really need to analyze deeper to understand what's happening. So let's begin. Okay, मैं अब हम चलते हैं हमारे CDR की तरफ. हम CDR तुम सबसे शेयर करती और CDR from June 8th, Disha's CDR, Sushant's CDR, Riya Chakrabarty's CDR, and Sandeep Singh's CDR. These are the four CDRs we would be analyzing and talking about. I know many would know कि किन किन को कॉल गया. Many would have them on fingertips, but there's no harm in revising it. There's no harm in boiling our own blood by seeing that over and again. And that is one of the reasons क्यों मेरे वीडियो के आगे इतना लंबा एक मोन्टाज होता है, so that जब आप सेशन में घुसो तो आपका दिमाग ऑलरेडी फिर गया हो उन लोगों को देख के. Let's do that. चलो हम अपना दिमाग फिराएं, अपना खून और गर्म करें और देखें what who is what, who called who since the beginning, since June 8th. And here's our first article. Disha Salian's CDR shows no calls between 8:30 p.m. to 1 a.m. on day of her death, claims Rane. So, bhai, this is not the actual CDR, but a hearsay from a neta who's also maybe trying to fulfill his political agendas. Okay, he states that 8:30 to 1 on the day of her death, Disha के CDR में कोई भी कॉल नहीं है. Let's read on to this article more. Did Disha Salian's call data records not feature a single call till about 4 hours before her death? Bharatiya Janata Party leader Nitesh Rane raised a significant point, questioning why she had not communicated to anyone from 8:30 p.m. on June 8th to 1 a.m. the next day. The Maharashtra MLA also asked why no details about her mobile tower location were available, as he questioned the celebrity manager's fiance Rohan Rai's role. Nitish Rane on Disha Salian's CDR. So again, the same Mr. Nitish Rane, who has been nothing but just shut about the fact that शुरू में आके उन्होंने बोल दिया कि दिशा ने इसको कॉल किया, दिशा ने उसको कॉल किया, दिशा के कॉल से 100 पे कॉल गया and what not. But when we are actually asking for him to step up and speak about it, they just decided to stay shut. And then वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो इलेक्शन में खड़े होंगे तो हम जाके उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार दिशा सालियान के लिए आवाज उठाई थी या सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाई थी. So that is the question we need to ask ourselves, that would we let him use us like this, or would we resort to some kind of a measure wherein he has to come out and speak up? Because this is something which we really need to hang to and ensure that Nitish Rane is now vocal. And if not then he is of no relevance. वो फिर कुछ भी बोले, he is just fulfilling his political ambitions and nothing else, because he's looking forward to the BMC elections and we all know that. And पार्टी चाहे कोई भी हो,
चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एमवीए हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, एट द एंड ऑफ द डे वो एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। एट द एंड ऑफ द डे वो सारे पॉलिटिशियंस हैं। तो पॉलिटिक्स करना उसका काम है, उनका काम है, चाहे वो कोई भी नेता हो। तो माय ओनली रिक्वेस्ट, हम नेताओं से उम्मीदें ना बांधें, हम खुद अपनी आवाज उठाएं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। जैसे आप लोग आके हर जगह जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत या जस्टिस फॉर दिशा सालियान ये भी लिखते हैं, तो वो एक इक्वल इंपॉर्टेंस माना जाता है टू व्हाट मैं कर रहा हूँ या टू व्हाट कोई और यूट्यूबर कर रहा है, क्योंकि हम भी यही कर रहे हैं, हम आवाज को उठा रहे हैं। हम आप सबकी आवाजों को कोलेट करके एक एक जगह पे इकट्ठा करके हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड दैट्स व्हाट आवर एम शुड बी। मूविंग फर्दर इन द आर्टिकल, speaking exclusively to Republic TV, Nitesh Rane said, "I want to know what happened to Disha, that she was not in communication with anyone from 8:30 in the night to 1 o'clock. Her phone had absolutely no numbers after looking at the CDR. What were the mobile tower locations?" Now, what does this Rohan Rai actually know, and what happened in the house before she jumped off or before the suicide? I want to know, why are these missing links there? Where have these people been, and why are they not talking about things? Now, it is obviously a very valid question. It is obviously a very valid question कि दिशा सालियान अगर किसी पार्टी में है, या दिशा सालियान के घर पे कोई पार्टी हो रही है, तो could it be a possibility कि she wouldn't use her phone at all from 8:30 to 1? And I'll tell you a very a personal example out of my experience, out of you guys would be able to resonate. अगर आप कहीं पे हो, अगर आप किसी भी पार्टी में हो या किसी भी गैदरिंग में हो, आज की डेट में एक ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन ट्रेट बन गया है कि हम हर 10 मिनट में, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम टाइम, वैसे लोग तो हर 5 मिनट में अपना फोन देखते हैं, बट हम हर 10 मिनट में कम से कम वी सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द फोन, एंड देयर इज न्यूज ऑफ दिशा सालियान के फोन पे कॉल आने की बट गोइंग अनआंसर्ड। मुझे नहीं लगता कि कोई, आई नो अगेन इट वुड बी jumping into conclusion, I don't want to do that, but still my take is that मुझे नहीं लगता कि 5 घंटे या 6 घंटे अगर उसमें कॉल भी आ रहे हैं तो यू नो उठाया क्यों नहीं जा रहा है उन्हें? So that's a big question, and we will dig further. Let's see. टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल, एक वीडियो है जो मैं प्ले करने वाला हूँ, एक इंटरव्यू है। Let's see. क्योंकि टाइम्स नाउ इज वन ऑफ द मीडिया sources who went ahead and came up with this CDR wala thing in a full-fledged manner, so let me show you this. Excellent. Let's see this. I'll hide myself for a better view. There we go. The Disha call records news break by Times Now. They claim the phone has to be switched on to collect data from it, be it by the Mumbai police, any agency, or by the FSL. And when the phone is on, there could be incoming messages and calls. Those are not responded to and are noted down for investigation. This is the official version, at least what the version. I hope you guys are able to see the screen. अगर आप यहाँ पे देखोगे, remove the Insta block comment from screen. Oh, अच्छा, okay, my bad यार, sorry, मेरे को ध्यान नहीं था वो अभी तक है. I'm not so used to the technology, सीख रहे हैं हम, सीख जाएंगे धीरे धीरे, धैर्य के साथ. चलो आगे बढ़े. ये जो कॉल्स आप देख रहे हो, ठीक है, नाउ देयर हैव बीन इंटरनेट एक्टिविटी. ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर नॉट डेटा कॉल्स, दीज आर नॉट डेटा कॉल्स मतलब वो जो कैरियर कॉल्स, बट दीज आर इंटरनेट कॉल्स.
or maybe internet messages which have gone non-responsive. So let's proceed. We've gotten from our sources within the Mumbai police, they say that it has to be switched on. Incoming calls are not answered during that particular period. Kajal Iyer joins us now from Mumbai. Meghna, my colleague, also joining us from the big screen. Kajal, I'll come to you first. This is what the Mumbai police sources are telling Times. Now, they say that any agency, be it the FSL or the Mumbai police, will have the records. The phone has to be switched on. They also claim that any incoming calls during that period were not answered. Yes, they did not talk specifically about this case, but they're saying that this is a protocol. So when I asked them, they said that the phone has to be switched on if at all any data has to be downloaded or any data has to be cross-checked. For example, if they want to verify the call data records, or if they want to see what were the last few messages, even for a preliminary investigation, even before it is sent to the FSL. When they are going through that, the phone has to be switched on, and once it is switched on, of course, data will be consumed, and there could be certain incoming messages and calls which are merely noted down. They are not really responded to, and they are noted down to see if there is any. बट अगर आप लोग को ध्यान हो, इन लोगों ने टाइम बताया ऑफ दिशा's demise 1:45 AM. ओके, चप्पल चोर इन्वेस्टिगेशन डिलीटेड लेटर. अरे चप्पल चोरों पे आएंगे, अभी आएंगे. उनका नंबर है बहुत तगड़े वाला. ओके, सो 8 बजे से फोन नहीं यूज होना रेजेस अ बिग क्वेश्चन यार. आज की डेट में आई डोंट थिंक कोई भी इतना ओल्ड स्कूल है. कोई ओल्ड स्कूल से भी ओल्ड स्कूल होगा ना, तो वो कम से कम 2 घंटे में एक बार ही तो फोन देख ही लेगा यार. But for all the internet activity that has happened of the incoming messages or calls, the data was downloaded. It means the phone was active, but it wasn't catered to. मतलब उस फोन पे वो डेटा को देखा नहीं गया, बट वो एक्टिव था. तो my first question is, क्या 8 बजे से ही उसके साथ कुछ होना स्टार्ट हुआ, या क्या 8 बजे से ही कुछ ऐसा हो चुका था ऑलरेडी और उसको सब ऑब्वियस करने के लिए इन्हें टाइम लगा ये सारा प्लान बनाने में? कुड बी. लेट्स प्रोसीड. No compound fracture was found in Disha body after fallen from such height. Manish, there are people who are saying कि skull fracture था, थोड़ा सा hairline. But that too, we do not have anything in writing that proves it, thanks to Chappal Chores. But yeah, let's proceed. Thread that they get from it for investigation purposes. All right, that's what the Mumbai police sources are indicating to Times now. Meghna, let's come to you for a bit now. This is, of course, a big news break. The fact that she died on the 8th of June. Until the 17th of June, there was some activity on her mobile internet. Absolutely. What we've managed to access are the records of Disha Salian's and phone, and this is what's important. This is the 8th of June, when you can say the internet usage of that day was about 3,420, and it's got similar internet usages in the days before. 3,420. I don't know ये MBs में बात कर रहे हैं, I guess. If they are talking about MBs, तो इसका मतलब ये होता है कि internet usage, and that too post Sushant's demise on 17th of June, 3,000 something MB means 3 GB, 3 GB data यूज हुआ है यार. हम तो दिन में 1.5 GB से ज्यादा आई डोंट थिंक सो यूज करते होंगे, बिकॉज वी यूज वाईफाई एंड ऑल एंड व्हाटएवर एंड व्हाट नॉट. चलो ठीक है, वाईफाई था भी नहीं तो क्या उसके फोन में बैठ के मूवी देखी जा रही थी? Girja ji, you have a very appropriate point. See, fracture हो सकता है because see उसका हाथ twisted था. Now there were news कि there was a skull crack as well, but we don't have any, as मैंने बोला कि we do not have any like evidence or written evidence that can prove कि fracture था. तो let's take it as कि fracture नहीं था, but her hand was twisted. That was said. Kailashi Gaurav Sharma says that data transfer किया होगा, could be a very big possibility. कि Foodholic Farah is saying 3-4 hours की online classes भी under 1 GB में हो जाते हैं. Exactly, ma'am. Exactly.
एंड द थिंग इज कि कोई ना कोई डेटा या तो ट्रांसफर हुआ है, मे बी वीडियो फाइल्स और एनीथिंग लाइक दैट, या फिर पुलिस वाले बैठ के जस्ट मस्ती कर रहे थे. But exactly, Girza ji, I agree. The hand twisting could have been due to the violence. I completely agree. So, yeah. Okay. Let's proceed. That also. What's interesting is on the ninth was the night when her body was found. It was found on the intervening night between 8th and ninth. On the ninth, the day after her death, is when interestingly the internet not only was used but it also stepped up. It went up to 57,330. So can the Mumbai police also explain why was the internet being used? But Oh, is there still echo? एक second मेरे को बताना. it was used much more than she would have used as well. So clearly there was a lot of Let me do this. एक second. I'm refreshing and let's see if echo is not there anymore. Okay. Yes, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हाँ, या मीनू जी मैंने वो किया है. आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग सो दैट एको ना आए, बिकॉज आई डोंट नो ये यूजुअली हो क्यों रहा है. होना नहीं चाहिए. अभी बताना मुझे कि क्या अभी भी एको आ रहा है. similar internet usages in the days before that also. What's interesting is on the ninth was the night when her body was found. It was found on the intervening night between 8th and ninth. On the ninth. एक सेकेंड. अब नहीं, अब सही है ना? ओके, perfect. Let me share it. Thank you so much for confirming. There we go. Of Disha Salian's and phone, and this is what's important. This is the 8th of June when you can say the internet usage of that day was about 3,420, and it's got similar internet usages in the days before that also. What's interesting is on the ninth was the night when her. Okay, I'll play this from beginning so that एक बार ध्यान से सुन लें. Let's do this. Have responded to the Disha call record news break by Times Now. They claim the phone has to be switched on to collect data from it, be it by the Mumbai police, any agency, or by the FSL. And when the phone is on, there could be incoming messages and calls. Those are not responded to and are noted down for investigation. This is the official version, at least what the version we've gotten from our sources within the Mumbai police. They say that it has to be switched on. Incoming calls are not answered during that particular period. Kajal Iyer joins us now from Mumbai. Meghna, my colleague, also joining us from the big screen. Kajal, I'll come to you first. This is what the Mumbai police sources are telling Times Now. They say that any agency, be it the FSL or the Mumbai police, will have the records. The phone has to be switched on. They also claim that any incoming calls during that period were not answered. Yes, they did not talk specifically about this case, but they're saying that this is a protocol. So when I asked them, they said that the phone has to be switched on if at all any data has to be downloaded or any data has to be cross-checked. For example, if they want to verify the call data records, or if they want to see what were the last few messages, even for a preliminary investigation, even before it is sent to the FSL, when they are going through that, the phone has to be switched on, and once it is switched on, of course, data will be consumed, and there could be certain incoming messages and calls which are merely noted down. They are not really responded to, and they are noted down to see if there is any thread that they get from it for investigation purposes. All right, that's what the Mumbai police sources are indicating to Times Now. Meghna, let's come to you for a bit now. This is, of course, a big news break. The fact that she died on the 8th of June. Until the 17th of June, there was some activity on her mobile internet. Absolutely. What we've managed to access are the records of Disha Salian's and phone, and this is what's important. This is the 8th of June when you can say the internet usage of that day was about 3,420, and it's got similar internet usages in the days before that also. What's interesting is on the ninth was the night when her body was found. It was found on the intervening night between 8th and ninth. On the ninth, the day after her death, is when interestingly the internet not only was used but it also stepped up. It went up to
57,330. So can the Mumbai I mean, almost 56 GB, or maybe you can call it 55 GB of data. Are you kidding me? 55 gigabytes from the phone on the 9th? Was Disha sending some files? Or maybe after the demise of Disha, this has happened. Yeah, exactly, June 9th. So after the demise of Disha. police also explained what only why was the internet being used, but it was used much more than she would have used as well. So clearly there was a lot of activity, not just switching on a phone to receive one SMS or two SMSs or any WhatsApp calls. There was active usage of the internet much more than any other, because earlier also when she would have been alive, she would have been receiving a lot of messages. When you receive messages, if you're not making typing out messages, if you're not making any calls, then your internet usage perhaps shouldn't have been this high. Look at the rest of the days when it is being used. On 9th, on 10th, on 15th, on 17th. Intermittently, you can see there's usage of the internet from Disha's phone. Now, we've spoken to several of the top cops as well who've explained to us the protocol. Now, the DGPs has said that nothing explains the police using the phone. As you can clearly see here, the internet was used. Nothing explains if the phone. So if you see 15th June and 17th June, 75,000 something, तो मतलब almost 75 GB इस दिन. 9th को 55 GB, 15th को approximately around 70 GB, and on 17th approximately around, what, this is also around 100 GB or something, maybe more than that. So this is a concerning number. This certainly is a concerning number. Okay, where is Pikachu? Pikachu has taken a break, a little break, क्योंकि उसको कुछ personal चीजें हैं. Already pre-decided था that he had to take a break for at least a couple of weeks. He'll be back. वो अभी बीच में भी आता रहेगा वैसे. So yeah, don't worry, he's here. Pretty much नहीं, पूरा. चलो. So one thing to notice: 9th June, 15th June, 17th June. I mean, enormous data usage. पोस्ट दिशा डाइड. मुंबई पुलिस को ऐसा क्या चाहिए था उसके फोन से, और इतनी बड़ी कौन सी फाइल थी जो डिलीट हुई है इनकी? ऐसा क्या डेटा लिया था उसके फोन से इन्होंने? चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. ओके, देयर वी गो. एक आर्टिकल पे चलते हैं. नीतीश राणे जी ने, नारायण राणे जी ने क्या बोला था? दिशा ने 100 नंबर पे कॉल किया था. प्रचेष्टा, I wouldn't say that deletion would cause that kind of data usage. I can very well say that it's not the deletion, but it may have been a transfer, or it may have been, like going out, like an outgoing transfer, या फिर incoming transfer. Mr. Kakkar too said about farmhouse. Don't worry, people. We will be covering Mr. Kakkar also. ये मेरा promise है. Within next 1 or 2 days, we will be covering Mr. Kakkar and his topics. We will be covering whatever is happening around. I won't leaving anything, including the NHRC case, National Human Rights Commission, जो कूपर के against file किया एक law student ने, which is an amazing thing that he did. So that is also we would be going ahead through. We will be, diving deep, like as always. It's like stealing SSR's hard drives. Prachesta, see, hard drive, abhi bhi we don't know how true that is, because it is said by Pithani. So until and unless CBI comes out with the fact that there were hard drives, then we'll get to know that there were hard drives. Shivangi, exactly. The right point, that data must have been transferred. I can very well agree to it. हो सकता है video files हो थोड़ी बड़ी, जहाँ जो transfer हुई हो. She seemed quite smart girl. Point. But again, जैसे आज की डेट में, मैं किसी चीज पे अगर रिसर्च कर रहा हूँ, I have a backup, but also मेरी अगर मैं गैलरी में जाता हूँ तो I have almost 24,000 photos just related to this case, photos and videos.
23 से 24,000 के बीच में नंबर है. सो वो फोन में एक बार आता है तो आता रह जाता है. एंड कई लोगों की आदत होती है कि वो डिलीट नहीं करते. अगर आपने बैकअप भी ले लिया है तो आदत होती है कि फोन में कौन जाके एक एक करके डिलीट करेगा. मुझे खुद लेजीनेस होती है कि मैं इतना नहीं डिलीट कर रहा, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या काम आ जाए. सो वी कीप इट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन. सो दैट्स व्हाट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि मे बी उसके फोन में कुछ डेटा हो, लाइक वीडियोज और समथिंग. जो रूमर्स आ रहे हैं कि रूमर्स भी आए थे ना कि दिशा वाज ट्राइंग टू लाइक कलेक्ट वीडियोस फ्रॉम सच प्लेसेस एंड ट्रांसफर इट टू सुशांत, एंड ही वाज कलेक्टिंग एविडेंसेस. कुड बी एनीथिंग, राइट? क्योंकि थ्योरीज तो बहुत सारी घूमी है. तो सर्टेनली इट्स अ डेटा ट्रांसफर दैट हैज हैपेंड अकॉर्डिंग टू मी. दैट्स व्हाट इट सीम्स. अब हम आते हैं. आई एम सॉरी यार, थोड़ी सी ना कोल्ड हो रखी है, बट डोंट माइंड दैट अगर मैं बार बार ऐसे करूँ तो, बिकॉज a little not good. So let's proceed. हाँ, नीतीश राणे जी एंड नारायण राणे ने कहा कि दिशा सालियान ने आयुष, bang on bro. BBC UK, British Brainwashing Corporation. Nice. नाइस. ओके, तो उन्होंने बोला था कि दिशा ने 100 नंबर पे कॉल किया था, ठीक है, जो कि उनके सीडीआर में नहीं दिखा. क्यों नहीं देखा? क्योंकि मे बी वैसी कोई कॉल हुई ही नहीं थी. However, a new conspiracy theory has been doing rounds about Disha Salian death case. It is being reported that a call was made from Disha Salian's phone number to 100, which belongs to the Mumbai Police Control Room right before her death. After this, Disha Salian called Sushant. The theory, put forth by a BJP leader, suggests that Disha called the police and Sushant to inform them that something wrong had happened to her and her life was in danger. India Today group decided to investigate the whole theory. We carried out a detailed investigation that involved talking to Mumbai police officials. चप्पल चोरों से बात करके क्या मिलेगा यार? चलो. Investigating the case and parents of Disha Salian, we found shocking information which reveals that the whole theory is fake and baseless. Obviously, India Today है तो हम यही तो expect करेंगे ना इनसे, fake और baseless बताना, क्योंकि they don't want अगर वैसा कुछ होगा भी तो वो बाहर आने को. And I just pray to God, as if you guys remember, uh, the day when Prashant came, uh, Prashant said on Sushant Day, the session with Prashant, he strictly mentioned, uh, I mean, not giving a clear information, but he says कि जितनी information गई है अभी तक CBI को, even he doesn't think कि CBI is working on that line right now. He said it very clearly. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रशांत का सेशन जरूर देखना, because that has a lot of information that we need to understand. We need to read between the lines. They cannot come out and clearly state things. Not even Prashant, but also जो प्रियंका दी वाला सेशन मैंने अलग से क्लिप करके फिर से अपलोड किया है, just for the reason so that all you people watch and understand that how she answered why there was a 306 in the first place and not 302. And also the much needed motivation that we all require. And trust me, if I'm sitting with this energy today, it's just because of the promise that I made her, and after looking at her face when she was so happy to see us all together. So let's proceed. Okay. So दिशा के 100 वाला जो कॉल है वो तो एक तरह से discarded hai. Abhi it's hanging in between. It's not even true. It's not even false, because we cannot believe a politician's word just like that until and unless we have a proof. And no media house has still got a proof that Disha dialed 100. However, they have a proof that what number did Disha dial? Her last call was not 200. Exactly, Sunanda. NBT interview, for some odd reason, due to
circumstances हम देख नहीं पाए, बट हम देखेंगे, हम आज ही देखेंगे, ये हमारा वादा है. हाँ, तो लेट्स शेयर द आर्टिकल. Okay. Disha Salian's last call was to NRI PAL, not PCR Mumbai Police. This is what Mumbai Police is saying. Okay, कि 100 पे कॉल नहीं आया, कोई एक ओवरसीज फ्रेंड है जिसको उन्होंने कॉल किया. नाउ अगेन, इस पे मेरा ये सोचना है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज इफ इट इज मुंबई पुलिस हु हैज गिवन दिस इंफॉर्मेशन दैट दे डिड नॉट, तो फिर तो बॉस हो सकता है कि चप्पल चोरों ने कोई ना कोई लोचा यहाँ पे किया है कि वो 100 नंबर की कॉल हटा दी गई है. बट जैसी मेरी इंफॉर्मेशन है, इट्स मुझे इतना पता है कि एटलीस्ट फॉर 7 years या 17 months, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द नंबर्स, बट देयर इज अ पर्टिकुलर नंबर कि उतने टाइम तक nobody can remove पुलिस के कॉल का 100 नंबर का CDR. It's against the law, it's against the system itself. So if Mumbai police, or let me say for that matter, chappal choro ne ye kiya hai, so they have committed a big crime, and when CBI comes out with everything, they would be held accountable for, and they should be punished equally. पढ़ते हैं कि क्या कहा इन्होंने. The last call from 28-year-old celebrity manager Disha Salian's phone was to her NRI friend and not to 100. Mumbai police have clarified this. This clarification came following statements by BJP MLA Nitesh Rane during an interview that Salian's last call was made to the police control room, which he felt raised questions about her death. Police had said that Salian took the drastic step of jumping off the 12th floor, again, 12th floor, 14th floor, Dodo theory, of a Malad high-rise on June 8th, soon after her conversation with this friend, a call throughout which she had been distressed. Making a shocking revelation in the Disha Salian case, Rane had said, okay, my bad. Rane had said that the former manager of Bollywood actor Sushant Singh Rajput had dialed 100 after the alleged party she attended in Juhu on June 8th. The day she died, refuting the baseless allegations, a senior police officer said that Salian's last call was to her friend Ankita and not the police control room. Who is this Ankita? And also, according to her friend Ankita, who was the last person to speak to Salian, the celebrity manager had made a video call at 11:30 p.m. ऐसा बोला मुंबई पुलिस ने, ध्यान से पढ़ो. She made a video call at 11:30 p.m. और अभी हमने टाइम्स नाउ में CDR देख के क्या देखा कि 8 बजे से लेकर 1:30 तक there was no calls or no activity whatsoever. अगर कोई डेटा इंट्रूजन हुआ भी है तो that was not catered to. That raises a big question. तो मुझे ये अंकिता वाला कॉल ही एक बहुत बड़ा फ्लूक लग रहा है, बिकॉज द CDR says something else. और CDR पे मैं ज्यादा बिलीव करूंगा क्योंकि CDR is something which is a call data record. I mean, it's explanatory though, but again, तो अगर CDR में वो कॉल ही नहीं है तो हाउ कैन मुंबई पुलिस ब्लेटेंटली लाई कि उसने किसी अंकिता को कॉल किया है? तो फिर अगर या तो ये सच है तो कौन है वो अंकिता? अंकिता सतूर या अंकिता लोखंडे? Ankita, who returned to the country last month, had told police in her statement that Salian had been depressed and disturbed throughout the video call. Salian was crying and disturbed over a professional deal that did not work out and had been asked to hand over the project to another colleague, said Ankita during the call. Ankita had spoken to everyone present at the party and asked them to cheer up Salian, but to no avail, an official said. देखो यहाँ पे फिर से वो काम को लेके डिप्रेशन वाली चीज बताई जा रही है. इट्स द सेम एग्जैक्ट पैटर्न जो इन्होंने सुशांत के साथ किया. इट्स द सेम एग्जैक्ट पैटर्न जो इन्होंने
संदीप नाहर के साथ किया है, जो इन्होंने आसिफ बासरा के साथ किया है। चप्पल चोर, क्या एक्सपेक्ट करें और इन लोगों से? क्या करें, मतलब जीना छोड़ दे? एक सेकेंड, चलो अगले उस पे चलते हैं। एक एक करके सब पे आएंगे, एक एक करके अच्छे से। हम्म, आज हम मूड में हैं, और इसके बाद सीडीआर का टॉपिक कवर करने के बाद जो हम दिखाने वाले हैं, कुर्सी ऐसे पकड़ के बैठ जाइएगा, होने वाला मजा आएगा। चलो। हाँ, Mumbai police explains why Disha Salian's phone was active even after her death on June 8th. तो इनका ये कहना है कि on Monday, Times now exclusively accessed Disha's call data records, and it emerged that her phone was active even after her death on June 8th. In fact, calls were made from her phone on 9th, 10th, 15th, and 17th of June. So it's not data transfer only. Calls were made from her phone. Why were calls made from her phone? That is my biggest question. दिशा के फोन से कॉल पुलिस वाले क्यों करेंगे? शायद उनकी चप्पल टूट गई हो, ऑर्डर करनी हो दूसरी, तो कॉल कर रहे हो, हेलो चप्पल भिजवा देंगे, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। Questions were raised as to how Disha's phone was in use even after her demise, and that if it was seized as per the procedure or not. I don't think so it was. जिनसे फाइल नहीं संभलती वो फोन क्या संभालेंगे? In order to find answers to these questions, Mirror now spoke to its sources in the Mumbai police, and it has been learned that the police officials deliberately used Disha's phone to check the angle of her death being connected to that of Sushant. अगर इनको पुलिस ऑफिशियल्स को सुशांत के डेथ से कनेक्शन देखना था, चलो डेटा डाउनलोड मान लिया, चलो डेटा ट्रांसफर मान लिया, why would they go ahead and make a call from Disha ka phone? The source told the website Disha died on the night of 8-9 June. We seized her phone at that time when on अच्छा एक और चीज है, इसका फोन अब मुझे ये नहीं पता कि शी जम्प्ड विद हर फोन और विदाउट द फोन। तो अगर फोन के साथ शी जम्प्ड तो सीज कैसे हुआ, और विदाउट द फोन इफ शी जम्प्ड तो फिर ठीक है, कुड बी। When on 14 June, Sushant died and theories of these two deaths being interconnected surfaced, we, in order to check this angle in detail, to see if there was any truth to any of these theories, called Disha's fiancé to the Malwani police station on 15 June. The senior cop further said that once Rohan came to the police, their team, with his permission, checked Disha's phone, which was already in their custody. He informed that they checked Disha's Facebook and Instagram accounts on June 15 to see if there was anything hinting towards the conspiracy theory. As per the Mumbai police sources mentioned in the report, Rohan was called in by police on June 17th again to check Disha's social media accounts, and it was because of that that the CDR shows data usage on the side said date. बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। तो इन्होंने रीजन दिया है कि 17 जून को अप्रोक्सीमेटली अराउंड 70 GB, हाँ, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 70 GB डेटा इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये रोहन राय मैगी नूडल को आना था चप्पल चोरों के पास, और इसको बस चेक करना था दिशा सालियान का सोशल मीडिया अकाउंट। भाई 7 साल तक चेक कर रहा था क्या बैठ के, इतना डेटा? और हमने क्या किया, हमने बोला अच्छा जी चप्पल चोर बता रहे हैं, हम मान लेते। नहीं भी मानते तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम अगर आवाज उठाएंगे तो हमें ये बीबीसी जैसे न्यूज चैनल बैठ के डेसिमेट करने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ कैन यू थिंक हाउ पावरफुल वी हैव बिकम कि a firm like BBC is after us. I feel happy about it, excited. Maybe someday
ये वाला सेशन ना चला रहे, ऐसा नहीं, खैर ये तो बहुत छोटा सेशन है, करेंगे आगे, बहुत बड़े बड़े करेंगे। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला क्वेश्चन कि चप्पल चोरों ने दिशा के फोन से कॉल क्यों किया, द फर्स्ट थिंग। सेकंड, सोशल सलोनी जी, वेरी गुड क्वेश्चन कि व्हाई डिड दे नॉट चेक हर सोशल मीडिया अकाउंट ऑन लैपटॉप, मे बी अ पॉसिबिलिटी रोहन राय के पास पासवर्ड नहीं होगा तो उसके फोन में ही एक्सेस करना होगा, कुड दैट बी अ पॉसिबिलिटी, यू नो, क्योंकि लॉकडाउन रहता है अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम तो वी कैन जस्ट गो एंड सी। बट 70 GB का यूजेज, यार तुम यूट्यूब से ना एक 5 घंटे की वीडियो भी डाउनलोड करोगे ना, तो आई डोंट थिंक 10 GB, 15 GB, 20 GB, 25 GB मैक्स, उससे ज़्यादा डेटा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्या डाउनलोड या शेयर किया है, और कॉल्स भी की हैं। शिवांगी, लेट्स नॉट विश फॉर समवन एल्सेस। आई नो इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुस्सा आता है तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। उनको बचा लिया ना हरीश शेट्टी ने, हरीश शेट्टी एंड टर्सी चावड़ा ने मिलकर, उनको तो बचा लिया, उनको तो बचाएंगे, क्योंकि उनको उनका करियर चलाना है, और भी क्लाइंट्स आएंगे ना जिनको वो जबरदस्ती फिर ड्रग इंड्यूस करके, जैसे फैजल खान के साथ किया, उन्हीं की जुबानी में हमने सुना। तो चलो, कॉल क्यों किए गए, एंड रोहन राय सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने आया था, इज व्हाट इज बीइंग फेड टू पीपल, व्हिच अगेन आई फील इट्स बुलशिट, इट्स नॉट, it is not even making sense, it is not making sense at all. So let's see, ये वाला, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब हम सबको पता है, हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि रोहन राय, जैसे ही सीबीआई का नंबर आया, जैसे ही सीबीआई की न्यूज आई, ये बंदा गायब हो गया, और ऐसा बताया गया कि ये शुरू से ही गायब है। चैट रूम में एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो, क्या आप लोगों को पहले से पता था कि रोहन राय मुंबई पुलिस के पास एक्चुअली जा चुका है क्वेश्चनिंग के लिए? इफ यस देन प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मेरी मेमोरी से ये बहुत फेडेड आउट था। जब मैंने ये आर्टिकल देखा तो मैंने बोला कि यार ये रोहन राय तो शुरू से ही गायब था, एंड ऐसा बताया गया है कि वो, हमें नहीं मालूम था कि वो गया है बात करने मुंबई पुलिस से, राइट? बट यहाँ पे we see, which was updated by Pink Villa on September 21st. September 21st. Disha Salian's fiance, Rohan Rai, meets cops investigating her death, might approach court against media trial. ये है हमारा मैगी नूडल, जिसको मीडिया ट्रायल लग रहा था, इसका अभी यूट्यूब ट्रायल चल रहा है। Sushant Singh Rajput's former manager Disha Salian's alleged suicide case is being investigated by the Mumbai police. Her fiancé Rohan Rai, who was earlier suspected to have escaped the city following Disha's death, has reportedly returned to Mumbai. अच्छा, वापस आए हैं मुंबई, okay, and is in touch with Mumbai police probing her death. Reports even suggest that, unhappy with the media trail around the case, he or Salian's family might approach the court. Salian was found dead after she allegedly fell from 14th floor of her house in Mumbai. I understand Saloni ji Penkwala cannot be trusted, but same kind of articles are there, 3-4 articles or more, which says कि Rohan Rai met Mumbai police. तो मुंबई पुलिस से ये मिला था। आई एम ग्लैड दैट वी आर रिफ्रेशिंग दिस, क्योंकि ये हमारे दिमाग में, अब अगर हमने पहले सुन के कभी मिस भी कर दिया हो तो अब हमें ये जानना चाहिए कि रोहन राय एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा था बट सीबीआई के साथ नहीं। तो व्हाई इज नितिश राणे पर्टिकुलरली बैंकिंग ऑन रोहन राय कि उसको सब मालूम है, वो आके बताएगा। वहां भी एक क्वेश्चन उठता है ना कि क्यों ही करेगा वो, जब वो मुंबई पुलिस का कोऑपरेट कर रहा है और वो मीडिया ट्रायल के अगेंस्ट जाने की बात कर रहा है, तो व्हाई वाज नितिश राणे सेइंग कि उसको सिक्योरिटी दो, वो आके बताएगा। आई मीन सीरियसली, वो ऑलरेडी कोर्ट जाने की बात कर रहा है अगेंस्ट द मीडिया ट्रायल दैट्स गोइंग ऑन। ओके, लेट्स प्रोसीड। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, ओ हो इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग, बस इन्हीं के अकॉर्डिंग तो बातें करनी है हमें, इसलिए तो हम आते हैं यहाँ पे।
Chappal Chor officials have said that Rohan is not needed in the connection with her case. The cops have recorded his statements previously and do not suspect of any wrongdoings. पहले बोला जाता है कि रोहन गायब था, जब वापस आया तब मुंबई पुलिस से मिला. बट देन मुंबई पुलिस चेंजेस देयर स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट्स, और वो चेंज करके बोलते हैं कि रोहन राय इज नॉट नीडेड इन कनेक्शन विथ हर केस. उसकी जरूरत ही नहीं है, चाहे वो घर पे था, चाहे वो 35 मिनट या 40 मिनट बाद नीचे आया आफ्टर दिशा फेल, जैसा बोला जा रहा है. एंड उसकी रिकॉर्डिंग पहले ही ले ली थी मुंबई पुलिस ने, जब वो भागा हुआ था. कैसे? कौन सी चप्पलें पहन के उड़ते हैं ये? आई डोंट गेट इट. चलो आगे बढ़े. With regards to the case, the Mumbai police is yet to clarify if this was suicide or accidental death. As per the latest development, the police have examined CDR, CCTV footage, statements from eyewitnesses, evidences, ground intelligence, and medical reports in connection with the death case. If nothing else is suspected, the police will most likely file a closure report of the same. इनकी ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है नहीं, पॉलिथिन में ग्रीन कपड़ा लेके जाते हैं. ग्राउंड इंटेलिजेंस. तो मुंबई पुलिस यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. पहले कहती है कि रोहन राय वापस आया जब सितंबर में, तब मुंबई पुलिस के साथ उसने कोऑपरेट करना स्टार्ट किया. 21 सितंबर. When did CBI enter the case? सितंबर में ना. अगस्त. अगस्त. एक सेकेंड. अगस्त. अब मुझे एक बात बताओ, जब सीबीआई अगस्त में आ गई है, तो सितंबर में मैगी नूडल को क्यों चप्पल चोरों के पास जाने की जरूरत? वो सीधा सीबीआई के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि दिशा सालियान केस उस टाइम तक सीबीआई नहीं देख रही थी. गुड एक्सक्यूज. और जैसे ही सीबीआई थोड़ा सा पेस बढ़ाने लगी टुवर्ड्स दिशाज केस, मे बी, तब फिर मैगी नूडल जी हो गए दफा. मैं 2 मिनट में आता हूँ, जो कभी 2 मिनट में होता नहीं. मतलब मैगी नहीं बनती ऐसे ही. क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस कि क्या बोलेगा कोई. सो मिस्टर रोहन राय, यू आर इन डीप शिट बडी. यू आर इन डीप शिट. Not just YouTubers, but you. BBC, bring it on. चलो आगे बढ़े. Okay. Vora, Rohan Rai. Okay. Let's move to the. अब आगे बढ़ते हैं. सो हमने अभी ये समझ लिया कि दिशा सालियान 9th जून, 15 जून, 9th, 10th, 15th एंड 17th, ये 4 दिन एक्सेसिव डेटा यूजेज हुआ है. कुछ आर्टिकल्स ये भी कह रहे हैं कि दिशा सालियान के फोन से कॉल्स भी किए गए हैं. बट चप्पल चोरों का कहना है कि वो सिर्फ मैगी नूडल आया था, उसको बस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब अकाउंट देखने थे, वो देख के चला गया. फिर ये भी कह रहे हैं कि मैगी नूडल इनके पास सितंबर 21 के बाद आया कोऑपरेट करने के लिए. बट हमें जरूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि जब वो भागा हुआ था पहले से, जब वो नहीं था, कहीं गायब था, तभी हमने उसकी रिकॉर्डिंग ले ली थी वर्चुअली. उन्होंने ऐसे टेलीपैथी किया कि मैगी नूडल प्लीज रिकॉर्डिंग भेजो, और वहां से ऐसे आ गई. मे बी वो डेटा ट्रांसफर हुआ होगा दिशा के फोन में, उसकी रिकॉर्डिंग आई होगी स्टेटमेंट की. लॉट ऑफ क्वेश्चंस. और ये केस बंद है इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद.
We heard Rohan Rai planned cremation on 9, body was given only on 11. Exactly, Girjaji. And what I believe or what I understand is there could be a very high possibility that जो 9th को cremation हुआ है, क्योंकि 9th को कुछ हुआ है, there were news of Rohan Rai going ahead and planning a cremation. 9th को जो cremation हुआ है, according to me, वो दिशा का ही था. That's my take. Again, I'm not saying, I'm not concluding, I'm not jumping into conclusions, but my take, जो 9th को cremation हुआ है वो दिशा का था, and जो 11th को body पहुंची है भगवती could have been Agnes Lisa Smith. And that's why Disha case is the key to SSR case. वहीं से आगे बढ़ेंगी चीजें अभी. Let me share the other article. जब SSR की CDRs आना बाहर स्टार्ट हुई, जब SSR के कॉल रिकॉर्ड्स बिहार पुलिस ने स्टार्ट किए निकालने. बिहार पुलिस was the first one who tried tracking everything. On 11th it was my take. Again, I'm not saying it was, but मुझे जो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा probability है कि एग्नेस की बॉडी गई है 11th को, एंड जो 9th को क्रिमेशन हुआ है वो दिशा का ही हो गया है. एंड ये जो कोविड टेस्ट की कहानी बनाई है ना इन्होंने, ये काल्पनिक है. दैट्स व्हाट आई फील. क्योंकि सुशांत के टाइम पे इस काल्पनिक कहानी की जरूरत नहीं थी, दिशा के टाइम पे थी. क्यों? दैट्स द क्वेश्चन टू आस्क. मूविंग फर्दर, ये तो रहा कि दिशा के सीडीआर से हमें क्या पता चला, कब कब उसके कॉल यूज हुए, कब कब उसके फोन में डेटा यूज हुआ, कब कब मैगी नूडल आके उसका सोशल मीडिया चेक करके गया. एंड एक यूएस की कोई एक फ्रेंड अंकिता, यूएस या यूके, वो एनआरआई, अंकिता को कॉल किया rather than 100. We don't have any proof of it. But these are just the theories. Now let's proceed further with SSR CDR. आज हम CDRs का ऑपरेशन करके रहेंगे. Okay. बिहार पुलिस. Let's start with what, क्योंकि मुंबई पुलिस की तो मतलब इंटेग्रिटी में ही नहीं था कि वो एसएसआर की सीडीआर देखे भी, और अगर उन्होंने देखी भी होगी तो उन्होंने बस एक्सेल पे ऐसे चढ़ा दी होगी, अच्छा एक काम कर 13 जून को इसका कॉल डाल दे, एक काम कर 12 जून को इसका कॉल डाल दे, 11 जून को इसका कॉल डाल दे, ऐसा दिखा दे कि ही वाज हैविंग अ पैटर्न ऑफ कॉलिंग पीपल एंड ही वाज इन टच विद एनीवन एंड एवरीवन. बट what when Bihar police, the actual police, instead of chappal chores, when the actual police stepped in, what did they do? They came out with a statement that Sushant Singh Rajput's SIM cards were not registered in his name. We are tracking all call detail records. Now I would like to tell you, it was Bihar police who came out with the news कि from 8th to 14th. Neha, I'll share the petition link in just a bit. Matlab, once we are done with everything, end mein I'll share the petition ka link for Disha. Rafael, Agnes, Lisa Smith, we have done a session on her. You can, if you want to go through it, just ping me on Twitter DM. I'll send you the link for that video. I think people should know who Agnes Lisa Smith was, a very important character around the case. Now, as I was coming back to the fact कि बिहार पुलिस केम आउट विद द पॉइंट कि 8 तारीख से 14 जून के बीच में सुशांत सिंह राजपूत had changed 14 SIM cards in a span of 6 days. 14 SIM cards. और उनमें से शायद एक या दो ही उनके नाम पे रजिस्टर्ड थे, बाकी के नहीं, as per बिहार पुलिस. Let's see what they have to say. The Bihar police have said late actor Sushant Singh Rajput, who had changed several SIM cards in the last few months, had none of them registered in his own name. None of them. Okay, ek do bhi nahi the, none of them were registered in his name.
They have also said that they will investigate the death of his ex-manager Disha Salian, who died on June 8th, just 6 days before Sushant was found dead at his Mumbai home. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आज की डेट पे बिहार पुलिस पे सीबीआई से ज़्यादा ट्रस्ट करूंगा. अगर बिहार पुलिस को भेज दो ना केस करने, वो सॉल्व करके लाके चाहे 6 महीने लेगी, लेकिन 6 महीने में केस सॉल्व करके लाके रख देगी. जब इन लोग दिशा सालियान केस की तरफ बढ़ रहे थे, तब इन्हें रोका गया. तब इन्हें रोका गया, विच इज वेरी सैड. तब फिर सब ऐसे बंडलों में बिके, बंडलों में. अच्छा, तुम गुप्तेश्वर पांडे होती, तुम लेती, ये लो तुम 4 गड्डी पकड़ती, ये एक एक गड्डी है जितने जितने के लिए, व्हाटएवर. सीरियसली यहाँ पे बोला, we will also interrogate the family of Sushant Singh Rajput's former manager Disha Salian, who died few days before Sushant's death. Even after constant attempts to connect with them on phone, we have failed to establish any contact. Agar family was saying, uh, भास्कर, आई विल चेक इट. मैंने जैसे बोला कि कल मैं उसके ऑब्जेक्ट आईडीज के साथ टाइम स्टैम्प कन्वर्टर लेके आऊँगा, सो वील सर्टनली गो अहेड एंड चेक व्हाट्स व्हाट. वो हमारे सामने बेटर तरीके से क्लियर होगा. आई सर्टनली गो गेट इनटू दैट. मैं कल वो आर्टिकल की लिंक, जो ऑब्जेक्ट आईडी की लिंक आती है ना, वो आपके सामने ओपन करके एंड आई विल शेयर दैट. लेट्स सी, मे बी अ पॉसिबिलिटी व्हाट यू आर सेइंग कुड बी ट्रू, बिकॉज या दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल. तो अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब दिशा सालियान के पेरेंट्स were okay coming to the media and saying that it was a suicide and has got nothing to do with Sushant Singh Rajput's case, when an agency like Bihar Police is trying to connect with them, police wasn't able to establish any contact. The very big question, why? The biggest thing, क्यों बिहार पुलिस टच में नहीं आ पाई? नीचे लिखा है, none of the SIM cards that were being used by Sushant was registered in his name. One of them was registered in the name of his friend. Siddharth Pitani. We are now tracking the call detail records and so on. Talking about investigating Sushant's ex-manager Disha Salian's death on June 8, the Bihar police further said, we will also interrogate the family, blah, 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 जैसा इन्होंने बोला. On Saturday, an official of Bihar police said that Sushant's girlfriend Riya Chakravarti, against whom an abetment to suicide case has been registered in connection with his death, was under their watch. The Bihar police also recorded the statement of film director Rumi Jafri in this case. The 4-member Bihar police team arrived in Mumbai on Wednesday to probe the abetment to suicide case, blah, blah, blah. Okay. When asked whether Riya would be interrogated, an official of the Bihar police said, it is not required as of now, but she is under our watch. But as we know, when Bihar police was trying to get in touch with Riya, she was nowhere to be found. हमें आगे पता चलेगा वो कहाँ थी, कौन से विला में, कौन से विला में मिरांडा और डायनासोर के साथ बैठ के ट्यूटर हो रही थी, हम वो भी देखेंगे. Another member of the visiting team said they have sent a notice to Riya under relevant sections of the Code of Criminal Procedure, asking her to cooperate with the police in the probe. He also said that Chappal Chores was cooperating with them in the investigation. ये कैसे बोल दिए? उनको तो हमने नो कोऑपरेशन करते हुए सामने सामने देखा है, मीडिया ने दिखाया है. चलो आगे देखें. Jaffrey, who was reportedly going to cast Sushant and Riya together, was quizzed for around 4 hours, said an official. The police would be recording the statements of 4 or 5 more persons from the film industry, he said. Till now, the police team from Bihar has met the late actor's friends, colleagues, and relatives. They have recorded the statements of 6 persons: Rajput's sister, who stays in Warsaw, former girlfriend Ankita Lokhande, a cook, his friends, and colleagues. KK Singh, Sushant's father, lodged a complaint. Okay, we know this. Okay. So, ji,
सबसे पहले तो बिहार पुलिस का कहना है कि 8 से 14 जून के बीच में सुशांत सिंह राजपूत changed 14 SIM cards, like literally 14 SIM cards. Okay, Mubina Hashmani. Okay, Mubina is saying please drop the link here about Lisa Smith. जो हमने एग्नेस पे वो करी थी, let me drop उस सेशन का लिंक यहाँ पे. I'll quickly share. The known unknowns नाम है उसका, as far as I believe, जितना मुझे याद है. Let me go back. Okay. Not here. Not here. Not here. Yellow people. मैंने एक लिंक डाल दी है. This is the one. Agnes Lisa Smith covered in the session. So you guys can refer to this session and understand who was Agnes, what exactly could be her connection with this case. So please watch it whenever you would have time. थोड़ा सा लंबा session है, but देख लेना, it's gonna help. It has a lot of other information, apart from Agnes, wherein we have talked in depth about Sameer Bangara and the other connections. So yeah. अब मेरा पॉइंट है कि SSR चेंज 14 सिम कार्ड. सबसे पहले ऐसी क्या नीड हुई 8 तारीख के बाद कि उन्हें 14 सिम कार्ड बदलने पड़े, जो कि इतने फ्रीक्वेंसी में पहले नहीं हो रहे थे. बट ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 14 सिम कार्ड्स विद इन 6 days ही हैड टू चेंज. व्हाट कुड हैव हैपेंड? और उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि देयर इज नो फाउल प्ले, देन चप्पल चोरों को 21 चप्पलों की सलामी देने का मन करता है. Threats, savvy saying threats, obviously threats, someone is trying to compress everything. Like BBC, boycott BBC. हर थोड़ी देर में बोलूंगा, याद दिलाता रहूंगा. BBC को उनकी नानी याद दिलानी है. उससे पहले let's proceed further and let's go to the other article. SSR must be getting threats. I can agree, but मुझे एक ये भी बहुत ज़्यादा लगता है, या बहुत ज़्यादा I feel कि SSR को इन सब चीज़ों, उन थ्रेट्स वगैरह के बारे में इतना क्लियरली नहीं बताया गया, या he was kept away from such kind of threats. Why I feel that is because of the fact that mystery friend telling the media that SSR used to keep telling me that there is something. Sandeep knows already. So maybe उसको एक कॉन्फिडेंस में लेके रखा हो कि संदीप कह रहा हो, या फिर वो whoever he or she might be telling SSR कि don't worry, I'm there, nothing's gonna happen, and तू बस मेरे को बता जो हो रहा है, अपन सब सॉर्ट कर लेंगे, I have political connections, ये है वो है, and we'll take care of it. That could be one of the reasons. And on top of that, also the fact that मीतू दी was with सुशांत, तो वो सिम कार्ड कब और कैसे चेंज कर रहा था और क्यों कर रहा था, we would not have any idea until and unless Meetu Di comes out in the open and talks about it, because I'm sure she might have an idea. It's just that, just for the reason that case का जो investigation का जो pace है उसको कोई impact ना पड़े, maybe that would have been the reason she is still quiet, and obviously she would have said everything in front of CBI. Will we discuss that video where SSR is being dragged from shoulder and taken in car, that party video? Obviously, P Jain, अभी तो खतरी का तो एपिसोड आने वाला है. खतरी is a little far off अभी पहले उससे we have
specifically Sandeep Singh, we have specifically Ankita Lokhande, we have specifically other people as well. तो हम सब पे जाएंगे एक एक करके INK पे भी आएंगे. इम्तियाज निसार खत्री तो बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा. तुम लोग बोलोगे बस करो, और कितना खत्री खत्री करोगे, ऐसा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. CDR of Sushant Singh Rajput, Riya Chakravarti and friends makes big revelation. Mumbai. Late Bollywood actor Sushant Singh Rajput last spoke to his girlfriend Riya Chakravarti 9 days before his death, and that too for a very short span of time, showed the CDRs accessed by IANS. Again, 9 days. It means on 5th, June 5th. Yeah. And once again, I'm not, मुझे एक question आया. I'm not sure that the body that went on 11th was Agnes Lisa Smith, but I very much feel that's what it is. Kyuki Agnes Lisa Smith died in the intervening night of 9th and 10th. However, Disha Salian died on 8th. तो फिर अगर इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 9th एंड 10th इफ एग्नेस डाइड, तो 9th को जो शाम में ही क्रिमेशन हो गया होगा, मेरे हिसाब से वो दिशा का हुआ होगा. दैट्स व्हाट आई फील. That's again my take. I'm not concluding, I'm not jumping to conclusion. The actual truth could be something different, but after considering all the possibilities, that is what I think. Now coming back to Sushant Singh Rajput ka this CDR wala thing. 5 जून को SSR ने बहुत थोड़ी सी देर के लिए ही रिया को कॉल किया. 5 जून को. Wasn't she staying with SSR at that time? I have no clue. Okay, एक सेकेंड. Shobha, I didn't get your comment. Sorry. If you can elaborate. According to the CDR, Riya and Sushant spoke on June 5 twice for a very short period when the conversation lasted for less than 2 minutes. The CDR showed that Sushant made a call to Riya on June 5th at 8:19 a.m. सुबह 8:19 पे, which lasted for 114 seconds. After the very short conversation, the next call from Riya to Sushant lasted for less than 3 seconds. It was made on June 6th at 9:59 a.m., which is the next day. सिर्फ 3 second का call. Archana is saying Lisa's father is a cop. Yep, I'm aware about it. I am aware about it. Okay. Yeah, Shobha, that is something which no one can do, yaar. See, you would never know. ऐसा ये बात तो गलत ही हो जाएगी ना कि why does he make girlfriend without knowing them? You come together with a person to know them, you know, to know them better. And once you get together with them, that is how you start knowing them. अब पहले से पूरा जान के then coming is something which I don't feel, because आज की डेट में चीजें ऐसी ही चलती है कि you get to know person after you are together. That's how things work in the new world. And lapse of judgments can happen with anyone, right? Anyone, the best of us. सुशांत के साथ भी हुई कि वो ताई के चक्कर में गया. That was a lapse of judgment from him. The CDRs also showed that the late actor didn't make any call to Riya or receive any call from her from June 1 to 4th. In May, okay, 1 से 4 को कोई कॉल नहीं था, 5 को एक कॉल, 2 कॉल थे, एंड 6 तारीख को एक 3 सेकंड का कॉल था जो रिया ने कॉल किया था. In May, the two actors spoke 19 times. The longest conversation between the two took place on May 9th. Now, I completely understand. ये सारी calls रही होंगी because of the fact कि उस time पे Riya Chakravarti was staying with Sushant. If I'm not wrong, she left the house on 8th. Okay, she left the house on 8th. Now, let's proceed. Besides these 2 long calls, all the other calls in the month of May lasted for less than 3 minutes.
The CDRs accessed by IANS also highlighted that the two actors did not speak to each other over phone in the month of April. The two had last spoken to each other over the phone. ये तो past में जाए जा रहे हैं. On a complaint lodged with the Bihar police, blah blah. Okay. Now here it gets interesting. पीजैन एक सेकेंड, मैं कमेंट्स ना सारे कभी कभी मिस भी हो जाते हैं. लेट मी चेक. कभी अगर मैं मिस कर दूँ तो प्लीज़ गुस्सा मत होना यार, मैं अकेला ही हूँ तो मैं साथ में अगर वो पढ़ रहा होता हूँ ना तो आर्टिकल, तो साथ में कमेंट्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है. पीजैन का कहना है, आई फील ताई ऑलरेडी प्लान्ड विद भट्स अबाउट killing. This message on WhatsApp is done to make a story since 7 to 8 June. Could be. Possibility. But what I feel is whatever happened with Sushant has happened in a jiffy. He was already a target for them. He was already भास्कर ब्रह्मा डन भी हो सकता है, लव यू भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग. क्योंकि ये कॉल 5 जून की है, तो 5 जून को तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था ना. तो आई फील आपने जो ये बोला पी जैन, बहुत सही बात है. could be a very strong possibility, but what I feel is, again, my take is the fact that he was already a target for them. Okay. And now Sushant being a target, they already had their plans. They already had installed doctors like Karsi Chavda and Harish Shetty in his life. But at the end of the day, what exactly happened? The same thing that we are sitting here and witnessing. तो माई टेक इज कि सुशांत के साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ बिकॉज दिशा के साथ जो हुआ वो सुशांत को पता था. एल्स दे वुड हैव मेड हिम लाइक फैजल खान. एग्जैक्टली. पी जैन जी, वेलकम. वरुण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. यार ओके, तो दैट इज व्हाट इट इज. कि whatever happened with Sushant, it certainly happened because of the fact that he got to know about Disha Salian. Now, this article here gets very interesting. We all know about this, but let's refresh. Riya Chakravarti dialed Shruti Modi 569 times, 259 calls to Samuel Miranda. अगर ताई बैठ के एक इंटरव्यू पे बोल रही है कि मैं तो सुशांत की लाइफ बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती थी, ये तो मुझ पे झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो तुम सुशांत की मैनेजर को 569 कॉल्स करोगे और सैमुअल मिरांडा को 259 कॉल्स करोगे. व्हाई वुड नॉट सुशांत डू इट इफ यू आर नॉट हैंडलिंग हिम और यू आर नॉट कंट्रोलिंग थिंग्स अराउंड? बिगेस्ट क्वेश्चन. Now, meanwhile, Riya Chakravarti exchanged more calls with Sushant Singh's associates as compared to him, as revealed by her CDRs. Late Bollywood actor Sushant Singh Rajput's girlfriend Riya is being investigated by the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate, along with her family members, on the basis of the Bihar police FIR registered on the complaint of the late actor's father, KK Singh. According to the CDR, Riya made 569 calls to Shruti Modi and the latter called her 222 times. Riya was also in constant touch with Sushant's house manager, Samuel Miranda. The CDR shows that she called him over 259 times while the latter called her 28 times. All the calls between Riya and Miranda were made between August 16, 2019 and July 14, 2020. अब अगर ये कह रही हैं, ताई जी कहती हैं कि मैंने तो कंट्रोल नहीं किया, तो आप मिरांडा को क्या मिरिंडा ऑर्डर करने के लिए कॉल कर रही थी? इतना आप क्यों कॉल कर रही थी? वो तो हाउस मैनेजर था ना, घर पे रहता था. आप क्या, why did you take over Sushant's life? That's the very basic and simple question that goes out to this creature, ताई.
The CDR also revealed that Riya called up her brother Shovik Chakravarti. उससे हमें कोई लेना देना नहीं. The CDR also showed that Riya exchanged 1112 calls and SMSs with her father. उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं. Okay. Meanwhile, the calls late after Riya calls Sushant was the late actor called Riya 51. So these are just going ahead and sharing the numbers. Wait a second, including Riya, Miranda, Shruti Modi, her chartered accountant Ritesh Shah. Okay. ओके. एक और चीज दिखाते हैं. फैजल खान याद है? फैजल खान, आमिर खान, हरीश शेट्टी. चलो. More details are emerging from Riya Chakravarti's call records, which show that the girlfriend of late Bollywood actor Sushant Singh Rajput was also in touch with several celebrities like superstar Amir Khan, Shraddha Kapoor, Rakul Preet Singh, one of his ex Aditya Roy Kapoor, Rana Daggubati, Sunny Singh, and dance maestro late Saroj Khan. According to the call detail records of Riya, she had called Amir Khan once while the superstar reverted to her in the form of 3 SMSs. अब मुझे बताओ, अब I would like to ask this question. कमेंट हटा देते हैं. अब और क्लियर हुआ? फैजल खान, हरीश शेट्टी, आमिर खान और रिया का कॉल टू आमिर खान and receiving a revert in 3 text messages. सवाल ही सवाल है, सवाल ही सवाल है. अब तो और क्लियर होता जा रहा है. How did Amir Khan jump in between? Farhan Akhtar, I could have absorbed, I could have gulped. Mangal Pandey, ये अच्छा नहीं किया. Raises a lot of questions. रकुल प्रीत सिंह का हमें पता है. And also out of all the 3 Khans, यहाँ पे भी लिखा है, out of all the 3 Khans, only Amir Khan's name has been found in Riya's call records. Strange and very strange. हम इसकी बात ही कर रहे थे just a couple of days back. देखो क्या क्या निकलता है. तभी आई ऑलवेज एंकरेज कि अपन आगे बढ़ेंगे तो सिस्टमैटिक वे में बढ़ेंगे, क्योंकि हम जब सिस्टमैटिक वे में एक सीक्वेंस बना के आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अब हमें पता चल रहा है कि हम कितनी सारी चीजें मिस करके आए हुए हैं. नाउ वी आर गेटिंग टू नो कि ओके, देयर आर आल्सो दीस काइंड ऑफ कनेक्शंस दैट वी हैव बीन मिसिंग. नहीं तो अभी तक हम यही सोच रहे थे कि मे बी ताई ने फरहान को कांटेक्ट किया होगा एंड फरहान के थ्रू आमिर खान को कांटेक्ट किया होगा. हम थोड़ा लंबा घूम के जा रहे थे. थैंक्स टू दिस आर्टिकल एंड द सीडीआर, इसने हमें सीधा सीधा सामने रख दिया. रफाइल एंजेलिस, इफ यू डू नॉट नो, द थिंग इज कि हमने 2 दिन पहले फैजल खान का इंटरव्यू देखा था, जिसमें फैजल खान ने चीज़ें बताई थी कि मुझे 20-20 घंटे के लिए सुला देते थे मेरी ड्रिंक में ड्रग इंजेक्ट करके या सम काइंड ऑफ मेडिसिन दे के, फिर उन्हें ज़बरदस्ती देने लगे. और जो वो डॉक्टर थे जिन्होंने वो किया था उनके साथ, उनका नाम है हरीश शेट्टी. हरीश शेट्टी इज़ द सेम डॉक्टर जिसका नाम ताई ने लिया था ये बोल के कि हरीश शेट्टी also went ahead and prescribed modafinil to Sushant and also a couple of medications related to anxiety or depression. माउंट ब्लैंक किसका? मंगल पांडे के अंकल का. और ताई के कॉल रिकॉर्ड में मंगल पांडे. Too many coincidences happening. Too many. ये आमिर खान कहाँ से आ रहा है बार बार. चलो अब देखते हैं हम SSR की कॉल रिकॉर्ड्स का जो एक्सेस हुआ है. टाइम्स नाउ का एक वीडियो है. आई एम जस्ट शेयरिंग दैट. लेट्स गो.
एंड गाइज मुझे लिटरली नहीं पता था कि यहाँ पे हमें आमिर खान का नाम दिख जाएगा. इट वाज completely unexpected and uncalled for. So yeah, this is this is this is a सरप्राइज टू मी एज वेल, क्योंकि मैंने आमिर खान का नाम पहले इस आर्टिकल में नहीं पढ़ा था. बट अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे हरीश शेट्टी का चेहरा सामने साफ नजर आ रहा है. बढ़िया, लेट्स गो, लेट्स प्रोसीड. Coming in, inputs coming out of Mumbai, Riya's claims that Sushant's relations with his family weren't good has fallen flat yet again. Family sources reveal that Sushant spoke to his father thrice in the last 2 months of his life. Last two calls were on the 19th of May 2020. Sushant, according to the family, also used to deposit around 25 to 30K per month in his father's account without fail. This money he used to send to his father for his father's monthly basic expenses. So let's quickly go across now. Initially in the investigation that Sushant's relationship with his father perhaps was stained, has no real basis, given the fact he used to send money to his father regularly and used to speak to him quite regularly as well. Yeah, I thought this we have been saying since long, that Team Riya, whenever they came out and stated that there was no good relationship in between Sushant, evidences were also clearly suggestive of the fact that whatever she was saying does not stand truth. If you talk about what was supposedly created with the Riya Chakrabarti, then we saw that Riya Chakrabarti with him. So these call record clearly states that what Riya had been claiming, that Sushant was not at all in the mood to call his father, and the relationship in between Sushant and his father. So as per Riya, कितने लोगों को याद है कि रिया ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि वो अपने फादर से टच में ही नहीं थे. बट एज पर द CDR ये भी आया बाहर की 19th मई को, which is just like what, 25 days before his demise, he spoke to his father. So which again was a true on Thai's end. और आज की डेट में वो खुला घूम रही है, एंजॉय कर रही है. क्या ऊपर वाले की भी लीला अपरंपार है नहीं. Father was not good. It's certainly not truth. Initially, when we started investigating this case, I spoke to KK Singh, and he said that Sushant used to talk to me when I was the one who told him that he should get married to any girl to whom he would like to. So these kind of claim by Riya Chakrabarti and Camp Riya has once again been denied by the family. There you go. Yet another claim falling flat. According to the family, however, this is what they're saying. Siddhant, yet again, one of the initial versions that Riya presented seems to be falling a bit expenses, but also they were in touch, both Sushant and his father. Siddhant, can you hear me? Was that question to me, Athar? Yes, Siddhant. Yes, Athar. Yes, absolutely right. Yes, absolutely right, Athar. As Priyank was mentioning that he was in touch with his. So this particular video simply, defies Riya's claim that Sushant and his father was not in touch. Sushant was kind of not in touch with them at all. Okay. Next second. Why is this happening to me? एक आर्टिकल है, हम खोलना चाहती बट वो ओपन नहीं होती. ऐसा क्यों होती? अमेजिंग. इट्स नॉट ओपनिंग. कोई नहीं, अब दूसरा आर्टिकल ओपन कर लेते. अब हमें CDR से रफायल नहीं ब्रो, ये सारी चीजें ऐसी कुछ नहीं है यार. नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज नॉट करेक्ट. ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट करेक्ट. आई नो वेयर दिस थ्योरी एक्चुअली केम फ्रॉम, बट दिस इज नॉट राइट, बिकॉज I cannot comment on it until and unless there is something in writing, there is something in any kind of an article or a video that I'm talking about from a trusted source, then yes. But no. Absolutely, Varun, you are correct. मतलब every day तो बात नहीं करेंगे ना, obviously father से, but it is a truth that Riya was Sushant was in touch with his father.
and he was talking to him. 19th May को उनकी बात हुई थी. So let's proceed to the other article. Sushant's talent manager's CDR shows calls to him and Riya. उदय सिंह गौरी, किस किस को याद है ये बालक? As the CBI intensified its probe in SSR's death, accessed call records of the late actor's talent manager Uday Singh Gauri punctures Riya Chakrabarti's claims that Sushant was suffering from a mental illness, was bipolar, and hence committed suicide. Republic TV exclusively accessed the CDR of Sushant's talent manager Uday Singh Gauri, who's also being questioned by the CBI since the central agency took over the probe. The CDR revealed that Uday was in close contact with Riya Chakrabarti and the two exchanged several calls, including on the day after Disha's death and one call a month after Sushant's demise. तो दिशा की डेथ के 2 दिन बाद एक दिन बाद उदय सिंह गौरी और रिया की बात होती है. Why would Riya talk to Uday Singh Gauri? Again, ठीक है, चलो. Because she had taken over Sushant's life, she might have got something to do. She spoke. But post Sushant, she again talks to him. कॉल करके बोल रही थी कि हाँ पेमेंट हो गई है, देख लेना और संभाल लेना. Who knows? Republic Media Network access CDR of Uday Singh Gauri debunked the suicide theory as it reveals that there were 5 calls made between Sushant and his talent manager on June 13th. Further, sources have also informed Republic TV that Sushant was in talks with a director for a potential film project, once again bringing to light how Sushant was looking forward to many projects at that time. Uday Singh Gauri's link with Riya Chakrabarti is also under the CBI scanner after the CDR records show both making contact via a call one day after the death of Disha Salian. चलो SSR के टाइम पे फिर भी मैं कुछ रीजन से समझ सकता हूँ, बट जस्ट वन डे आफ्टर दिशा सालियान's death, why would Riya talk to Sushant's manager, the same manager who ends up calling Riya and Sushant simultaneously back to back 5 to 7 times on June 13th before Sushant's phone goes off grid? Good question. Okay. In August 2019, Riya and Uday communicated with each other 13 times, out of which the latter called 8 times and the former 5 times. Both communicated once February, thrice in April, and once in May. Uday Singh Gauri's CDR records reveal that there was a 649-second call between him and Riya on June 9th. 600, okay. Almost 10 minutes. A day after Disha Salian's demise and within the 24-hour window when she left his house not to come back, the CDR also show a call between Sushant and Riya on the same day as well, on 9th. 9 तारीख को एक कॉल सुशांत और रिया के बीच में भी हुई है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि रिया ने ब्लॉक करके रखा था. Moreover, records also reveal that Riya Chakrabarti made a 69-second call to Uday on July 19th, nearly a month and 5 days after Sushant's demise. 69 seconds. एक महीने बाद अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, हेलो उदय, क्या तुमने अपना कोटक बैंक वाला अकाउंट देख लिया? ट्रांसफर आ गए पैसों के? आ गया ना? चेक करके बताना एक बार. अच्छा, देखो देखो, ओके, आ गया ना? ठीक है, चलो. और नेक्स्ट ट्रांसफर जब आएगा तब तुम्हें ईमेल कर देंगे, कॉल नहीं करेंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू. हो गया 69 सेकंड के अंदर. जस्ट ह्यूमर डाल रहा था. ऐसी कॉल नहीं हुई होगी. आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा मत मान लेना कि ऐसी कॉल हुई थी, प्लीज. हाँ, आगे बढ़ते. CDR records also show that Uday called Sushant 5 times on June 13th. जो रिया से बातें कर रहा था वो सुशांत को 13 जून को 5 बार कॉल करता है, a day before Sushant's mysterious death.
According to sources, Sushant was involved in a discussion with Uday and Tarun Thorani discussing a film project. अगर कोई फिल्म प्रोजेक्ट भी डिस्कस हो रही है तो 5 calls, I don't think. Prior to this call, the call details suggest that Sushant and Uday communicated with each other thrice in March, twice in April, 9 times in May, and 5 in June. Out of the 19 communications between Sushant and Uday since March, Sushant called Uday 7 times and Uday called the late actor 12 times. Chalo. Bought it. Got it. Republic has earlier also accessed details of SSR. CBI puts an end to suicide theory reports. What did they say? Okay, it is not related to the CDR. So, another key person to question is Uday Singh Gori. 9 June को, why would Riya Chakravarti speak to Uday Singh Gori? Just a day after Disha's demise. Not just that, 17 July, which is a month and 5 days after SSR's demise, and Uday Singh Gori calling 5 times to SSR on June 13th. और उसके अगर आप न्यूज़ अगर आप वो देखोगे ना किसी मीडिया हाउस का वीडियो अपलोड हुआ हुआ जिसमें ये CDR डिस्कस हो रही है कोई डिबेट, तो उसमें ये भी बताया गया है क्लियरली कि 13th को जब उदय सिंह गौरी का लास्ट कॉल गया है उसके आधे 1 घंटे के बाद से ही SSR का फ़ोन विच इज़ फ्रॉम समवेयर अराउंड द इवनिंग और लेट आफ्टरनून, तब से हिज फ़ोन वाज ऑफ ग्रिड एज इन इट वाज नॉन रिस्पॉन्सिव टू एनीथिंग दैट वाज हैपनिंग. सो उदय सिंह गौरी, दिक्कत है बाबा तुम मैगी नूडल के भाई निकल रहे हो, मत करो ऐसे. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल. छोटे छोटे आर्टिकल CDR के आर्टिकल्स, मतलब वी आर एक्चुअली फाइंडिंग निडल्स इन haystack. And trust me, it's working out because we are finding a lot of new details. आज हमें देखते देखते आमिर खान का कॉल रिकॉर्ड भी मिल गया. हम कल तक यही सोच रहे थे कि रिया ने किसी और के थ्रू मे बी उससे कनेक्ट किया होगा फॉर हरीश शेट्टी एंड व्हाट नॉट, बट या उसका स्ट्रेट कॉल रिकॉर्ड मिल गया. लेट्स मूव, लेट्स प्रोसीड, लेट्स गो टू द अदर आर्टिकल. अदर आर्टिकल हमको बोलती और हम तुमको पढ़ के सुनाती. Sushant Singh Rajput case, Riya Chakravarti's call details accessed. Actor was in touch with Mumbai top cop. क्यों भाई? चप्पल टूट गई होगी, चप्पल चोरों के सरदार से चप्पल ऑर्डर करवानी होगी. Huh? By the way, for the people who don't know, Mumbai police, for me is equal to chappal chores. After obtaining the call detail CDR of SSR, Times Now on Friday got hold of the call details of Riya Chakravarti. As per the CDR data, it seems the Jalebi actor was in touch with a senior Mumbai police officer. Bihar DGP Gupteshwar U-turn Pandey had earlier this week told the media that Tai is absconding. We do not have any information regarding she being in touch with even the Mumbai police. Pandey had said on August 5th, now the CDR suggests that Riya was allegedly in touch with the Thane boy. The Thane boy from the Thane angle, Abhishek Three-Face. Why? हमारा कोविड मैन. पता नहीं यार इसकी आज तक पता नहीं इसके लिए वैक्सीन बनी है कि नहीं. जब से कोविड हुआ है ठीक नहीं हुआ है बेचारा. इसके लिए फाइजर को मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि इसको उठा के ले जाना चाहिए और इस पे एक्सपेरिमेंट करके इससे बनवानी चाहिए वैक्सीन, क्योंकि कब से कोविड है इसे यार. गायब ही है बंदा, लिटरली गायब. जब से कोविड हुआ तब से गायब. आगे बढ़े. This is to be noted that Bihar police team that had visited Mumbai to probe the case could not meet Riya Chakravarti as whereabouts of the actor were unknown, क्योंकि ये हो चुकी थी गायब.
विला मोरिया में डायनासोर और मिरांडा के साथ बैठ के मिरिंडा पी रही थी. In a significant development, Tai appeared before the ED at the agency's office in Ballard Estate today in connection with the money laundering case lodged by this. The case stemmed to this. Okay. So यहाँ पे basically ये article goes ahead and tells us कि Tai was in touch with a top cop, the COVID man. क्यों? आई गेस कोविड मैन तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी नहीं था इस केस का. इस केस का आईओ वाज सम जगताप, एक का नाम था जगताप. I'll get you the names. तो why was she in touch with COVID man specifically, who was the first one to stand in front of the media and say कि open and shut case है जी, सुसाइड है. बहुत प्रोफेशनली चप्पल चोरों ने इन्वेस्टिगेट किया है, पॉलिथीन में ऐसे कपड़ा वपड़ा लेके गए हैं. कोविड मैन इज अभिषेक त्रिमुख है फॉर मी. और त्रिमुखे का नाम इतनी बार आया है इस केस में. द फैक्ट इज कि नो वन सीम्स टू केयर अबाउट इट. एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड निधि. नो वन सीम्स टू केयर अबाउट हिम. वेयर द हेक इज ही? एक न्यूज पहले दे दी थी किसी जमाने में कि चिचा को हो गया कोविड, शायद अभी उनको डेल्मिक्रॉन, ओमिक्रॉन, डेल्टा क्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट सबका कॉकटेल हो रखा है, तभी वो अभी तक सही नहीं हुए हैं, या तो उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया. और उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, उनको कोई कुछ बोल नहीं रहा आज की डेट में सोशल मीडिया पे. गोइंग बैक, यू नो, फ्रॉम वेयर एवरीथिंग बिगैन, द ओनली आइडिया इज कि जो नाम, जो चीजें, जो लोग, जो कैरेक्टर्स हम भूलते आ रहे हैं, हम उन्हें उठाएं, हम उन्हें दोबारा उठाएं. चला दो टैग मैगी नूडल और कोविड मैन के नाम पे, मोस्ट वांटेड. यही चाहिए. ट्रस्ट मी, ये दो लोग, मैगी नूडल और कोविड मैन, ये दोनों इस केस के बारे में सब जानते हैं. एवरीथिंग, एवरी स्मॉल थिंग. मैगी नूडल रेफर्स टू दिशा एंड कोविड मैन रेफर्स टू सुशांत. आगे बढ़ते हुए, let's go to the other article, and which is this. One of the best CDR expose which was done, और जिसका जिसका justification भी बहुत funny way में दिया गया था by Tai. That Tai talked to AU. I don't know why AU. Multiple times a day before Sushant died. After the CDR of SSR surfaced, Tai's call detail has been discussed a lot these days. Riya has saved the name of a particular person in her mobile with whom she was in a regular touch. Riya has saved the name of this person as AU, which is being discussed a lot. अब मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप ये न्यूज़ ढूंढने भी जाओगे ना आज की डेट में सोशल मीडिया पे, आपको ये छोटे छोटे से ही वो मिलेंगे आर्टिकल्स, AU वाले. कोई इन डेप्थ कुछ नहीं है. There is no in-depth analysis, there is no in-depth explanation of the article, या फिर कोई rhetorical ऐसा article नहीं बना हुआ है which states each and every detail about it. But if you search this AU वाला thing, you would only get 3-4 lines का mention कि कोई एक नंबर था जिसको उसने AU के नाम से किया था. अगर वो इसकी फ्रेंड अनाया उदास या अनाया उल्हाल या फिर whatever name she says she was, तो उसके बारे में भी इसी तरीके से बताया जाना चाहिए था जितना हम अभी आमिर खान वगैरह के बारे में देखते हुए आ रहे हैं, राइट? जब आमिर खान का इतना ओपन बताया तो अनाया उल्लास या उदास या उनाड़ जो भी, वो कहाँ की वो है? अनाया उदास कहाँ की प्रधानमंत्री है कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी? उसका नाम भी नहीं है इसमें.
यहाँ पे तो आर्टिकल में ये लिखा है कि एयू नाम से एक नंबर सेव था और उस नंबर से इतने कॉल आए थे 13 तारीख को। आज की डेट में अनाया उदास है किधर? मेरे को तो कोई अनाया उदास नहीं देखी पेट्रीआर की टीम में। जब ये फरहान अख्तर, शिबानी दांदेकर, इन लोग सब रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू कर रहे थे, मेरे को तो कोई अनाया उदास नहीं देखी। There was no sign of Anaya Udas. Who the hell is she? Nobody knows. हमें उस टाइम एक दे दिया गया, ये लो जी पिम पॉम की अल्पेनलीबे लॉलीपॉप आई है, इसे खाओ, खाते जाओ। हम खाते गए, हम समझते गए और हम बनते गए। मैगी नूडल इज रोहन राय। चलो आगे बढ़े। एयू कौन है? आई वोंट पुट माई जजमेंट और टेक्स ऑन इट। मॉल अभी थोड़ा चल रहा है। अभी बीबीसी देख रहे हो ना कैसे तड़प रहा है, ऐसे रैटल हुआ पड़ा है, बॉलीवुड रैटल हुआ पड़ा है। तो बीबीसी इज कमिंग विद देयर you know with all they've got. So Varun, if you're still here, I just told these people that no matter, अब ये बीबीसी को एक बार करने तो दो। हम सब जितने यूट्यूबर्स है ना, नो मैटर हु सो एवर is talking against Bollywood and standing with Sushant and Disha, we all will come together as a force, and we'll ensure कि ये जो बीबीसी जो हमें सप्रेस करने की ट्राई कर रहा है, we show them that we can be double of what we have done so far, and we'll do that. Moving further to the other article, तो ये जो AU वाला आर्टिकल है, अनाया उदास तो कोई है नहीं जी, but raises a lot of questions, big time. Okay, next article. अच्छा, ये इस बारे में हमने देख लिया है। जस्ट एक नाम महेश भट्ट भी डिस्कस, हाँ महेश भट्ट और आमिर खान एंड ऑल दैट दे हैव बीन डिस्कस्ड। तो ये तो रही CDRs. अनाया उदास इज पंकज उदास डॉटर. Okay, I would have to search if she has been like in super full support of रिया और पेट्रियार्की गैंग में कहीं थी या नहीं थी, या फिर उसका रिया के साथ कैसा कनेक्शन रहा है। निकल आएगा कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा। चलो, लेकिन फिर ये भी तो पॉइंट आ जाता है ना कि बिहार पुलिस ने फिर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये क्यों नहीं बोला कि हमें तो लगता है जी कि इसके पीछे अनाया उदास का हाथ है। उन्होंने ये क्यों बोला कि मुख्यमंत्री के बेटे का हाथ है? क्वेश्चन तो बहुत है। आगे बढ़े। इट्स अ कॉन्फिडेंशियल नेम, नहीं तो पूरा नाम बाहर आया होता ना। CDR का मतलब तो यही होता है ना, आपको डेटा मिल रहा है पब्लिक फोरम से, यू गेट टू सी देयर फुल नेम एंड नॉट द एग्जैक्ट नेम कि वो किस नाम से सेव है फोन पे। यू गेट टू सी द नंबर, यू ऑल्सो गेट टू सी कि किसके नाम पे ये नंबर रजिस्टर्ड है। यू गेट टू सी एवरीथिंग इन अ CDR, नॉट जस्ट कि ये किसके नाम से सेव है और इस नाम पे कितने कॉल्स या क्या गए। सो क्वेश्चंस। दिशा सालियान की CDR हो गई, SSR की CDR हो गई, रिया की CDR हो गई, काफी सारी नई चीजें पता चली, है ना, कि दिशा सालियान 9 जून, 10 जून, 15 जून और 17 जून 40 50 50 70 GB डेटा यूज हुआ है। और मुंबई पुलिस ने उसको एक्सक्यूज बनाया कि मैगी नूडल सिर्फ डेटा चेक करने आया था, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने आया था। कॉल्स गई हैं 17 जून को उसके फोन से, किधर नहीं पता। मैगी नूडल अगेन इज राय। सेकंड, संदीप सिंह, वही नेक्स्ट हमारा संदीप सिंह ही है। नेक्स्ट आर स्नेक मैन, बट बिफोर वी गो टू द स्नेक मैन वी विल गो टू, यार अलजीरी जा, प्लीज ये सब मत करो यार, प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब मत करो यार। कोई, तुम्हें लगता है कि कोई किसी की फैमिली को कंट्रोल कर सकता है? सबसे ऐसे थॉट्स लाते भी क्यों लाते हो यार? क्यों मत लाओ, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, family of SSR is well versed with law, with everything. His sister is a Supreme Court lawyer. Don't take her lightly.
She can take people for a ride when it comes to law. एब्सोल्युटली फेक न्यूज तो ऑब्वियसली वरुण भाई फेक न्यूज को तो सपोर्ट ही नहीं करना है ना. देखो हमारा शुरू से एक चीज रहा है, अगर हम कुछ शेयर कर रहे हैं, आई कैन सी देयर इज समथिंग रिटन, देयर इज समथिंग अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया. हैज योर नेम चेंज्ड ऑन योर टी शर्ट, इज दैट योर डेफिनेट? यार इट इज अ ब्रांड, अगर किसी को नहीं पता, FCUK स्टैंड्स फॉर फ्रेंच कनेक्शन. अब अगर इसको भी लोग कुछ भी पढ़ेंगे और कुछ भी बनाएंगे, by all means you're welcome, I'm right here. Let's go. Okay, आगे बढ़ते हैं. हमें वो भी दिख गया आज, आमिर खान का स्ट्रेट कनेक्शन विथ ताई, क्योंकि ताई ने डायरेक्टली आमिर खान को कॉल किया, जिसका 3 SMS में रिवर्ट आया. चलो वो भी दिख गया. उदय सिंह गौरी भी दिख गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ताई से बात कर रहा था एंड ऑल्सो ही कॉल्ड 5 times to SSR on June 13th, which raises a lot of questions. कि एक ही दिन में, अगर आप महीने में उनसे सिर्फ 7 बार बात कर रहे हो, बट आपको जून के महीने में एक ही दिन में उनको 5 कॉल करने की अर्ज हो गई एंड आप गायब हो उसके बाद. गलत बात. चलो बढ़ते हैं सांपों की प्रजाति की तरफ. देखते हैं कौन क्या कहता है. Let me see. एक सेकेंड. I'll share this interview. अरे वरुण ब्रो, इट्स ओके. क्लैरिफिकेशन नहीं, लोगों को मालूम है. लोग बस क्वेश्चन पूछते हैं पूछने के लिए, राइट? सो रहने दो, पूछने दो. बट थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग ऑल्सो, बट जरूरत नहीं है. लोगों को मालूम है, लोग बस पूछते हैं, आपको पता है क्यों. सो हैं अभी काफ़ी हैं. चलो आगे बढ़े. संदीप सिंह के बारे में बात करेंगे आज हम. ये 9 मिनट की वीडियो है, हम थोड़ा आगे आगे करके चलाएंगे, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए. पार्वती जी, I don't believe on any such bullshit being spewed around social media. अगर इसके बाद से किसी ने मुझसे पूछा कि what's your opinion about the alive theory, मैं अपने दांतों से अपनी नसें काट लूंगा. प्लीज समझो. हाँ चलो आगे बढ़े. Yeah, to the video, to the thumbs up guy. Thumbs up guy, there we go. Let's see what Sushant Singh Rajput said, Pranesh, Sandeep Singh and Mahesh Shetty, and that Sandeep Singh does not speak to Sushant Singh Rajput for 10 long months. What sort of friendship was this that he wasn't in touch? अच्छा, बेस्ट फ्रेंड 14 जून को पहुंचे हैं सर, एकदम जंप मारते हुए. आई होप ये शेयर, ओ यार गलत स्क्रीन शेयर हो गई ना, माय बैड, सॉरी पीपल. एक सेकंड, मुझसे गलती हो गई. रुको. ओके. एक चीज यहाँ पे शुरू में ही जो इन्होंने बोल दी कि स्नेक सिंह जो डे 1 पे आके खड़ा था, वो पिछले 10 महीने से देयर इज नो कॉल रिकॉर्ड ऑफ हिम टॉकिंग टू सुशांत एट ऑल. तो वो वहां पे गया था या भेजा गया था, वो तो वही बता सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. Rajput, he calls him his best friend, but for 10 months, no calls exchanged, no messages, not even on WhatsApp. And look what I've got on the big screen here. This is Akshay Bangar. For people who are wondering who this man is, he is the ambulance driver, Athar and Swati. And look at the date. This is the number of calls exchanged. 4 calls between Sandeep Singh
and Akshay Bankar. The first call is on June 14th, and look at the next call. The next call is on June 16th. Now the question is, the cremation happened on June 15th. What was Sandeep Singh talking to this ambulance driver a day later? संदीप सिंह ने इसके लिए ये कहानी बताई थी या बनाई थी कि सो व्हाट संदीप सिंह सेड इज कि ये पेमेंट के लिए मैंने इसे कॉल किया था. इसका जो भी पीआर मैनेजर है साहू, अभिषेक साहू या समथिंग, साहू है लास्ट नेम, सो उसने पेमेंट करी थी ऐसा बोला गया. बट वहाँ पे अक्षय बानगर की स्टेटमेंट में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया जिसमें उसने ये बोला था कि पैसे संदीप सिंह ने नहीं दिए थे, पैसे उसको किसी और सैमुअल मिरांडा ने दिए थे. दैट्स व्हाट ही सेड. सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था उसने कि सैमुअल मिरांडा ने पैसे दिए थे. अक्षय बानगर का ये कहना था और संदीप सिंह का ये कहना था कि 16 जून को कॉल इसलिए गया क्योंकि पैसे की बात करनी थी या फिर पेमेंट करनी थी. आगे बढ़ते हैं. Akshay Bankar is the ambulance driver. Even if Sandeep Singh were to come out and say that I called him, I was told by someone, we don't know. Because Sandeep Singh hasn't been talking to Times now. He's so rattled by the exposure over the last few days that when Arunil went to his building in Mumbai and tried reaching out to Sandeep Singh, he said somebody picked up the phone and said, साहब घर पे है, अभी फोन करेंगे. And then the second call, the response was, साहब घर पे नहीं है. I am sure Sandeep Singh is watching Times now as we speak. And he needs to come out, because if he doesn't, the CBI will summon him and will question him on these inconsistencies. Best friend supposedly, but no contact with Sushant Singh Rajput for the last 10 months. And this is strange. Isn't this, Athar? That June 14th, the 2 days after, and it's very surprising, Pranesh, as you were mentioning, right, same Rajput contact the family, but he contacted the family only after Sushant was dead. But in the meantime, there are absolutely no calls, and these particular calls raise suspicions. Why was he calling the ambulance driver 2 days after Sushant was killed or Sushant died of Mr. Sushant Singh Rajput? That Times now is posing to him, as Pranesh was saying, 2019 September being the last communication, last recorded communication in his call data records with Sushant Singh Rajput. And why did he need to call the ambulance driver again 2 days after Mr. Rajput was found dead? Right. You know what? अंकिता लोखंडे के साथ 47 calls, dude. But that is in 2019. That won't make a difference, not of relevance, but again. What is shocking is because on June 14th, when Sushant Singh Rajput was found dead, Sandeep Singh was the person who was seen at the flat where Sushant Singh Rajput was found dead. He also went to the hospital. There are visuals of Sandeep with sister Meetu outside Cooper Hospital, and there are reports of his presence outside the morgue as well. And now these call data records suggest that he was not in touch with Sushant Singh Rajput for 10 months. And when two best friends don't talk to each other for 10 long months, there has to be a reason behind it. Sandeep Singh should in fact clarify, was there a fallout? Why did he not stay in touch with? I remember clearly, Priyank, Sandeep Singh was also there the day Ankita Lokhande came to visit the family members. He was the one who accompanied Ankita Lokhande, which clearly means that he did know Ankita Lokhande as well. And according to his claims, he claims that Ankita Lokhande was the only one who understood Sushant Singh very well. So he knew a lot about Sushant Singh Rajput, and such a close friend who Sushant says is the only other friend apart from Mahesh Shetty does not speak to him for 10 months. Swati, but in the show also, he did not give a clear indication that what was the need of him going there. What we also know from Mr. Sanjeev Singh, who's a retired IAS, which was organized in the afternoon. It was a lunch party that Sandeep Singh rushed to his house, which was on the 21st floor, and he suddenly told them to switch on the television set. Till the time, there was no call which was received by Sandeep Singh. But Sanjeev, the host of the party, told it to Times Now a few days back that when Sandeep Singh reached, he suddenly told them to switch on the television set. He was continuously on phone, and then he left from that location. Later to that, what we got to know from one of the key eyewitness who had taken Riya Chakrabarti inside this mortuary, that it was Sandeep Singh who received a call from an international number, and later to that, Riya Chakrabarti was taken inside. So all the conduct of this particular individual
question him once again. So far, what is happening that all those people who were inside the flat are being questioned by the CBI. But this key person who claimed to be very close to the family member and who was present in all the visuals which are under radar of the Central Bureau of Investigation for tampering of evidence or the I just got a text from someone who covers, entertainment here in the city of Mumbai, and that person, he's a journalist, obviously, Swati. He has been telling me that it is very much possible that Sandeep might leave the country, but we'll have to wait and watch for that because we don't know on fact basis. These are the CDR details. Yesterday, the detail is once again putting a question and onus on Sandeep's platform because these details, Swati, of by Sandeep, for which his mobile phone need to be taken into forensic examination. Then only we'll be able to know that who are these individuals who were calling it from abroad. All right, stay on. Pranesh is back with us with some more on this. Pranesh, go ahead. I just want to highlight this point again, Athar, because something is clearly not right in this. If Sandeep Singh did contact, and he did actually, there's no room for doubt here. On June 14, the first call to the ambulance driver. Now the question is, let's go step by step. Who asked Sandeep Singh to arrange for an ambulance? He should clarify that. And after that, when the cremation happened on June 15, और अब एक सेकंड पहले इसको सुन लेते हैं, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहूँगा. मैंने चैट में भी ये चीज़ अभी नोटिस करी है एंड इट सर्टनली रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मैं आऊँगा इस पे, पहले लेट अस लिसन टू दिस लास्ट पार्ट. The next day in the evening, why was Sandeep Singh still talking to the ambulance driver? This is the question. Answer 333 is the by having a preliminary best friend clarify who asked calls, and the conversation lasted 227 seconds. This is something that the CBI will now pick up and will investigate Sandeep Singh. Okay. Now, there is a very important theory. Pehli baat, Sandeep Singh, according to CDR, was not in touch with Sushant Singh Rajput for the last 10 months. However, he was in regular touch with Ankita Lukhande. He was in regular touch with others like, Sanjay Nirupam and others, but not with SSR. Okay. Do you remember that mystery friend of Sushant Singh Rajput जिसकी आवाज मॉड्यूलेट होके रिपब्लिक पे चली थी? He said Sushant always repeated one thing. संदीप को पता है, संदीप को पता है, संदीप को पता है. There are two possibilities to it. Either the number from which Sandeep Singh was connecting with Sushant was not in the CDR or was taken off or was stricken off, or it was a number that nobody knows about. Okay. Second possibility is that the Sandeep that Sushant was referring to, again, reaching far, but a possibility, could it be Sandeep Nahar? Because he also met same kind of fate. Question, again, another question to look into. कि अगर संदीप सिंह की SSR के जितने भी नंबर्स हैं उसमें 10 महीने में कोई कनेक्ट नहीं है, तो SSR किसी और संदीप की बात कर सकता है, या SSR के पास कोई एक और ऐसा फोन हो सकता है या रहा होगा, या कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो इनके पास नहीं है और इनको CDR नहीं मिली उस चीज को, एंड संदीप सिंह would have done that. Point. Let's go to the other article. Sandeep Nahar didn't come for his last rites. Obviously, world peace, अगर ऐसा होता, suppose, let's take एक सेकंड के लिए भी अगर हम सोचते हैं कि संदीप नाहर है वो, एंड एक सेकंड के लिए भी उसे पता है कि क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 15 जून को ही उन्होंने CBI फॉर SSR लिखा था.
ठीक है, आप इससे भी सोचो, हाँ, ये भी मैच करो कि अगर संदीप नाहर को, इफ इट इज संदीप नाहर, देन ही नोज कि एसएसआर के साथ जो हुआ है, और अगर लोग ऐसे सुसाइड बता रहे हैं तो दोज पीपल who might have done it to him are still around and managing everything. That's why maybe 15 जून को CBI for SSR. That's how he might have known. Possibility. पता नहीं. Could be true, could not be true. बट जो दो पॉसिबिलिटीज मैंने बताई है, उन दोनों में से कोई एक तो पक्का है. ठीक है. दे डोंट नो ही नोज, बट बाद में पता चला ना. बाद में तो पता चला. चलो ये पढ़ते हैं. Sandeep Singh made 4 calls to Mumbai Cops probing Sushant death case, CDR reveals. In a shocking development on Wednesday, Sushant Singh Rajput's self-proclaimed friend Sandeep Singh had dialed 2 Mumbai police officers who were investigating the actor's death. As per the CDR, 2 calls were made to Bhushan Belnekar. Yeah, this was one IO, Bhushan Belnekar, and who happens to be the IO in the case on June 15th. जून 15 को कॉल किया. चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है कि कुछ फॉर्मेलिटीज रही हो पोस्टमार्टम के बाद, या फिर टू टेक देम टू मॉर्चरी और समथिंग, किसी रीजन से उसे कॉल करना पड़ा हो आईओ को. वन ऑफ देम लास्टेड फॉर नियरली 90 seconds, 1.5 मिनट की कॉल, चलो समझ आता है. Later, Sandeep Singh spoke to PSI Vaibhav Jagtap on June 17th, which is 3 days after, and then again on June 18th, that lasted over 2 minutes. Jagtap was Belnekar's deputy through the course of the police's probe in the death case. So why was Sandeep Singh, I mean, he might have different reasons to give to us कि मेरे को ये फॉर्मेलिटी करनी थी, वो करनी थी, बट आई गेस जितनी भी फॉर्मेलिटी थी, संदीप सिंह का रोल 14 और 15 जून को हो जाता है खत्म. उसके बाद उसको क्या ऐसी अर्ज लगती है कि ही स्पीक्स टू वैभव जगताप एंड ऑल्सो भूषण बेलनेकर, हु आर द आईओज ऑफ दिस केस. Big question. Okay, let's proceed. Both the cops have now been summoned for questioning by the CBI. I don't know इन चप्पल चोरों के साथ क्या हुआ, वो अब CBI ही बताएगी. The CBI's SIT team will summon Sandeep Singh, but the dates are yet to be fixed. Okay. June 14th and was among the first to respond. और ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना यार कि पिछले CDR, but something bothering me. I heard yesterday that a charge sheet filed by NCB against Tai is not quite favorable for SSR and how that was drafted. Hema, see, I know it's out of topic thing, but it's an important thing for us to discuss as well. I'll make it quick क्योंकि सेशन काफी लंबा हो गया है. Won't make it too long. CDR करके we leave. जो मैं आज शेयर करने वाला था एक और चीज, let me see if I'll share that or not. I will share that as well. थोड़ा सा टाइम लगेगा और, but वो important है. ठीक है. Now, this is a valid question, but again, how would you know? किसने, आपने कहीं पढ़ा, आपने किसी आर्टिकल में पढ़ा? बिकॉज प्रिंट मीडिया के आर्टिकल्स पे एकदम से बिलीव मत करो until and unless every other print media is posting that, or there are interviews related to that as well available. और अगर आप प्रिंट मीडिया का देख भी रहे हो तो look at some trusted websites which you can actually see कि जहाँ पे है. But I don't think कि ऐसी कोई न्यूज़ आई है. अगर किसी और को पता है तो they can put some light on this, but I don't think this could have happened because अभी तक वो डेट वहाँ से गायब है. Let's see. I'll also try to search आज बाद में post this session and let's see how it works. Going back to the article.
Smita Parekh, Sushant's family friend, further told Republic World that wherever a suspicion rises, Sandeep Singh's presence is there. Absolutely right. The family wants Sandeep Singh to be interrogated as he hurried all the procedures on June 14th and tampered with the evidence. He definitely has a bigger role to play in Sushant and Disha Salian's death. Now, this is a statement like which has uh, conviction to it. I mean, it is a statement made and not a question. So, yeah, I won't comment on this. But again, he might have hands, you know, in all of this because he certainly looked to me like a crisis manager. Sandeep Singh spoke to ambulance driver 4 times. We have already talked about it. अक्षय बानगर से इसने 4 बार बात करी. ठीक है, 10 महीने से जिस बंदे ने कोई बात नहीं करी थी, out of the blue that guy comes in and that guy becomes the first person to jump in all that is happening. In all that is happening. For what reason? We'll get to know once CBI comes up with it. Okay. No calls. एक second. 33 names including Thai and her brother. Exactly, Archana. Uh, petition, that particular charge sheet, अब वो तो वीरेंद्र सिंह ही बता पाएंगे. जब से मिस्टर वानखेड़े गए हैं तो एनसीबी की तरफ से बुरी ही न्यूज़ सुनने को मिल रही है. सबसे पहले तो वो डेट आगे पे आगे बढ़ती जा रही है दिशा के केस की. एंड ओके, सुशांत कॉल रिकॉर्ड शो नो कॉल्स टू एसएसआर फॉर मंथ्स. हाँ, हमने इन बारे में बात कर ली है. अब अगर आप लोग को याद हो, लेट अस सी इन्होंने और किस किस को कॉल किया. संदीप सिंह कॉल रिकॉर्ड शो ही स्पोक टू संजय निरूपम, जिन्हें हम जानते हैं, जरीना वहाब, ओहो हो, पंचोली, द जूनियर पंचोली की मदर जरीना वहाब, उनको संदीप सिंह ने कॉल किया. In a major breakthrough, Republic TV on Tuesday accessed the call details of SSR, self-proclaimed friend Snake Singh, which highlighted that several calls that were exchanged between him and the ambulance driver between 14th and 16th, despite the ambulance driver's statements. The record details also showed that calls that were made by Sandeep Singh to Congress leader Sanjay Nirupam and actor Suraj Pancholi's mother, Zarina Wah. According to the details access, Sandeep Singh had made 28 calls to Sanjay Nirupam between the period of 16th November to July 29th. Earlier, Sanjay Nirupam had claimed that he was with Sandeep Singh when the news of Sushant's death surfaced. On the other hand, his call details with Suraj Pancholi's mother Zarina Wahab have also surfaced. The reports suggest 5 calls have been exchanged between the two from September 4th, 2019 to June 20th. And June 20th के बाद there was no conversation from Sandeep Singh with Zarina Wahab. तो जून 20 को ऐसी कौन सी आपकी सारी चीज़ें डन एंड डस्टेड हो गई कि आपको दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. Again, the same name, right? Suraj Pancholi की mom. Why these names have to be there? Exactly, Nidhi. Why her? और सूरज पंचोली का नाम भी कितना उठा है. सबसे पहला बंदा था वो शायद डेफेमेशन मारने वाला, पुनीत वशिष्ठ के ऊपर करी थी इस केस में उसने. And also the fact that there is an article that literally states that Sushant's niece did say that they did not know Sandeep Singh as well. Just that Mitudi was so devastated at that point in time, someone was required to take care of her. And Sandeep Singh at that moment came in and took that advantage of becoming a crisis manager and making a shit show out of covering up a case and leaving a lot of loopholes. बहुत सारी चीजें हैं. संदीप सिंह, उदय सिंह गौरी, मैगी नूडल्स,
Important characters, Trimukhe, important characters that needs to be relived and needs to be raised every other day so that people remember. अगर हमें याद रहे ना रहे, लोगों को याद रहे. क्योंकि आज अगर हमने इतने ये सेशन किया है, हमें तो आज भी 3-4 नई चीजें मिल गई बिना एंटिसिपेट किए. वी गॉट द आमिर खान का थिंग, वी गॉट द फैक्ट कि रिया दिशा का फोन इतने इतने जीबी का डेटा यूज हुआ है ऑन 15th and 17th and 9th and 10th. We also got to know that Rohan Rai actually gave statement to Mumbai police to begin with. Then he got गायब and then he comes back on September 21st जब सीबीआई के पास ऑलरेडी केस है बट वो मुंबई पुलिस के पास जाके कोऑपरेट करता है. क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे. And the very important question, why a call to Zarina Wahab? One of the biggest question. And not to forget, Faisal Khan, Harish Shetty, आमिर खान, माउंट ब्लैंक, आमिर खान के अंकल का माउंट ब्लैंक, रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स में माउंट ब्लैंक, आमिर खान, एंड रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट में सेम डॉक्टर हरीश शेट्टी. क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस. आज मैं इतने में ही छोड़ूंगा. एक सेकंड. Basically, rumors are after Jia Khan case, Zarina Wahab has been monitoring stuff for exactly. That's right. That's right. And there is a particular article, Varun, जहाँ पे Zarina Wahab ने ना बहुत बहुत yes, he was seen there. हमने वो भी सेशन में कवर किया है जब वो अपनी कैप के ऊपर हाथ निकलते हुए ऐसे निकल रहा है. It is very much clear there. And तो सारी चीज़ें अब एक एक करके जब हम पास्ट में जा रहे हैं, जब हम शुरू से 8 जून से आगे आ रहे हैं, एक एक डिटेल में अगर हम जा रहे हैं तो अब एक एक करके चीज़ें कनेक्ट होना स्टार्ट हो रही है. दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ फ्लो चार्ट विच वी आर बिल्डिंग सीक्वेंस में, एंड दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग मूविंग फर्दर. आज के लिए मैं आप लोगों को और डाउनलोड नहीं दूंगा, ठीक है, और डाउनलोड नहीं दूंगा बिकॉज इट हैज़ बीन अ लॉट and there was something that I wanted to share but I also need to get into it a little more. Aaj raat ke liye I would get into that particular analyzing mode again, and then we will be going ahead and discussing that tomorrow for sure because that is very important for us to share or talk about. Papa Sugar is known for being reactive, so he has been told to shut up. Yeah, exactly. Varun, if you remember, Jia Khan ke cremation ke time pe Papa Sugar actually went berserk over media. So that was a time. Since then, he has been like always on the back foot. So Amir and Pooja Bhatt were dating once. हाँ, बहुत पुरानी बात. So that gives you that Bhatt connection to make your peace of mind there. That gives you that Bhatt connection ki how they can be connected. However, that is not of relevance here right now. The relevance is कि हमें ताई का और आमिर खान का straight connection तो दिख गया ना. बाकी आप फिर खुद समझदार हैं. Thank you आज के लिए. Once again, I would like to thank each and every one of you from the bottom of my heart for all the love that you have given. आज जो भी energy रही है, जो भी सब रहा है, Varun bhai, thank you so much. It has been because of the promise that we made together to Priyanka di on Sushant Day, और ये आप ही की वजह से हो पाया. That was the promise, and आप सबका प्यार जो मुझे आज एकदम समझ रहे हो ना. चलो मिलते हैं कल. Let the facts do the talking. One life. We'll see you tomorrow. और ये जो CDR पे जितनी बात करी है, थोड़ी इसको जाके ट्विटर के ऊपर फैलाएं, लोगों को बताएं, लोगों की आंखें खोले कि देखो इतनी छोटी छोटी सी चीज. अब एक काम करते हैं, फैजल खान का एक छोटा सा क्लिप निकाल के मैं एक काम करता हूँ यार. वेट, बहुत अच्छा करती हम अच्छा करती कि नहीं करती. अब हम एक काम करती, हम आप सबके लिए
अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करती in the chat room. And I would like to tell you, all are welcome to join, because this group is not just to go ahead and give you any kind of updates कि आज session इतने बजे, आज session उतने बजे, but it is also very important क्योंकि वहाँ पे डिस्कशंस होती है अबाउट एनी एंड एवरी स्मॉल थिंग दैट वी फाइंड ऑन रियल टाइम. वहाँ पे डिस्कशंस होती है एंड वट एवर डिस्कशन हैपन उसका जो भी कंक्लूजन निकलता है हम यहाँ ला के रखते हैं. सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट जो मैं डे वन से बोलते आ रहा हूँ. वी विल बी डूइंग दैट. सो हमको यूएई का लाइफ टाइम वीज़ा मिल जाती तो हम वल्ला हबीबी हम जन्नत सिधार जाती. चलो एक सेकेंड मैं ये भेज रहा हूँ. इंडिया बेटर है यार यूए से. ठीक है मतलब ये रहा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक. Thank you so much, Varun, for gracing our Telegram group with your presence. You're most welcome. Everyone is welcome. The group is public. It has been public. ये रही link. Join करिए. Discussions का part बनिए. And let's take this further. Thank you so much, everyone, once again. And have a good night. See you tomorrow.